Action continues in age group presents Jazz Super 4G National T20 Cup, and this one is coming to you between Karachi and Rawalpindi, the last game of Super 8. Well, the situation is clear in terms of the points table. The teams that have qualified for the semi-finals, they are clear. It's just that the lineup needs to be finalized, that who is going to be playing who in the semi-finals, and tonight's game will let us know. Both the teams will be keen to finish on a high before they get into the knockout stages. An all-important game in terms of keeping up their momentum and rhythm. Umar Amin was in good spirits, so was the Karachi camp. Shahnawaz Dhani, Sohail Khan has been in scintillating form, and Karachi will look to finish on a high, because if they do that, they will take that momentum into the semi-finals. Alongside me, I've got former Pakistan international Amr Saeed. Good evening, Amr. Thank you very much. And today is the last game of Super 8. What do you make of that entire round? What did you see? Anything that really inspired you or made you happy? Yes, it was a very, very good Super 8. All the matches were well fought. Some went very close. They went to the wire as well. All the teams have now seen their combinations. They have also tried their bench strength. So now it's all set for the knockout stages. No matter how good you've played throughout the tournament, now it's how you play tomorrow and the day after. And Karachi being the home side, there's a lot of expectations. Their side have been hot and cold, but they have found their final 11, I think. Do you think they look like a settled 11 going into that last game tonight and then beyond? Yes, I think so, because they have a very good mix of young players and experience. With Khurram Manzoor in the batting line, Asad Shafiq, and some very good all-rounders, very experienced all-rounders. And then there is these bunch of young cricketers like Ahmad Alam and this leg spinner. They have Arif Yaqub. So they're very, very talented players, and I'm sure they will be looking forward to perform well in this knockout stage now. I'm glad you mentioned Ahmad Alam. He's looked very, very good in this tournament, and we've seen some glimpses of his immense talent, and the stroke play that he's exhibited has been really scintillating. Yes, amazing, amazing. His hand-eye coordination is absolutely brilliant. The positions he gets into, the strokes he plays, they are absolutely brilliant. The one thing I would like to see is for him to continue once he gets that start, those 20s, 30s. I would like him to continue and score those 50s, 60s and take your team to a very good position or across the line. Yeah, and talking about their opponents, Rawalpindi, they had 3-3 to begin the Super 8. They have hit a little blimp, and now they lost a huge game the other day against Peshawar, 76 runs. Getting into the business end, is it good that they've got a wake-up call, or they should be low on confidence? Well, yes, at times just before the knockout stage, it's all right to lose a game or something like that, just to, as you said, just to wake you up. But of course, all the teams would like to have that momentum going into the knockout. But I think the only problem they are facing is the bowling, mainly Rawalpindi. The batting is quite good, but the bowling has been a bit of a question mark. Well, talking about Rawalpindi's bowling, and toss will determine if they're bowling first or bowling last. And to find that out, we joined Sikandar, who was out there in the middle just a while ago. Hello and welcome. It's the last game in the Super 8 before we hit the semi-finals tomorrow. And it's for the two big sides in the top four, Rawalpindi and Karachi Whites facing each other. And the decider of this will give us a clear condition where are the teams finishing as far as the top four goes. I've got Umar Amin, the captain of Rawalpindi, Asad Shafiq, Karachi Whites, and Mr. Ali Naqvi, our match referee. Asad, you have the coin. Tails. Tails is the call. असद यू हैव वन द टॉस क्या करेंगे असद जी हम लोग बैटिंग करेंगे अच्छा ऑब्वियसली कल का मैच भी देखा गया आज का शाम का भी ड्यू नहीं है और हाई स्कोरिंग है तो कितना माइंड में रखा हुआ आपने टारगेट के
अचीव कर लें पहले बैटिंग करते हुए? देखें जी, आइडिया यही है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, कि जो है अच्छा टोटल पुटअप करें और इनको अंडर प्रेशर करें, स्कोर बोर्ड के प्रेशर के साथ जो है इनको डालें। तो यही है हमारा माइंड कि अगर जो है वो अच्छा शुरू में पार्टनरशिप लगती है तो अराउंड 170 180 के बीच में कुछ भी होगा तो हमारी बॉलिंग उस लेवल की है कि डिफेंडेबल जो है वो डिफेंड करेंगे इसको। अच्छा असद, उस फेज पे आ गए हैं टूर्नामेंट के जहां आखिरी मैच है, राउंड कप सेमीफाइनल है, तो क्या एज अ कप्तान आप अब श्योर हैं कि मेरा कॉम्बिनेशन जो मुझे चाहिए था ओवर द टूर्नामेंट मिल गया है? जी बिल्कुल, देखें हमारी साइड काफ़ी बैलेंस साइड है और एक दो फास्ट बॉलर, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे तो आज दानी को रेस्ट दिया हमने और फिर हम कल देखेंगे जो हमारा बेस्ट 11 होगा। लेकिन कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं है कि हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं या हल्का खेलना है। हम लोग बिल्कुल 100% ये मैच खेलेंगे। यू हैप्पी टू प्ले एनीवन इन द सेमीफाइनल? यस, दैट्स फाइन। एक ही चेंज है धानी या और भी चेंज? नहीं जी, बस एक चेंज है। ठीक है, एक वन फाइनल क्वेश्चन, कितना स्कोर देख रहे हैं इस पे? मे बी अराउंड 170 कोशिश करेंगे, 170 175। चलिए, गुड लक। थैंक यू। उमर, यकीनन बैटिंग का मूड आपकी टीम का भी होगा या यू ओके विद चेजिंग? वेल आई थिंक यस, हमारा मूड तो यही था कि पहले बैटिंग करें, बट अगेन टॉस कंट्रोल में नहीं है और आई थिंक पिच का भी इतना कोई मैसिव डिफरेंस नहीं होता बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। जब आप कह रहे हैं पिच थोड़ी सी आउट ऑफ इक्वेशन है, तो आप अपनी टीम को कैसा देख रहे हैं? बेटर चेजर्स हैं या यू फील एज कैप्टन कि हम दोनों एंगल्स में ओके हैं? थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम लोगों ने कुछ मैचेस में अच्छा चेस भी किया है और कुछ में अच्छा डिफेंड भी किया है। सो आई थिंक वी आर अ वेरी बैलेंस साइड और कोई ऐसी स्पेसिफिक हमारी है नहीं कि हम लोग पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें। असद 170 देख रहे हैं पहले बैटिंग में, ये चेजेबल होगा? हम लोग कोशिश करेंगे 150 तक रिस्ट्रिक्ट करें। 150 यू फील इज इजीली गेटेबल? चेंजेस हैं टीम में आप? 4 चेंजेस हैं आज। चलो देख लेंगे हम पेपर। यस, जमान खान नहीं है, रज़ा मुस्तफ़ा रेस्ट कर रहे हैं, काशिफ अली रेस्ट कर रहे हैं और ज़ीशान मलिक रेस्ट कर रहे हैं। उन चारों की जगह उमैर मसूद को चांस दे रहे हैं आज। हैदर अली वापस आए हैं, उसके अलावा अवैस और बिलावल भट्टी। वेल डन उमर, थैंक यू। गुड लक टू यू। थैंक यू। ऑलराइट, सो it is Karachi Whites who won the toss and they've decided that they will bat first and put runs on the board. Well done. Well done, Umar Amin, for remembering all those changes. Plenty for Rawalpindi. Just the one for Karachi. It means that they're well settled. The changes really that Rawalpindi made, I think they were tactical, nothing to do with form or fitness. But Karachi, like I said, they have very, very good and settled team. Just quickly ask Amr, at the toss we heard both the skippers talking about the total 175 Asad Shafiq reckon. Umar Amin thinks 150. What do you think should be a good score batting first? Well, I think I'll go with Asad Shafiq. 170-75 is always on if you play proper cricket, proper cricketing shots. 175 is on. Good teams. The top teams have shown that this total is achievable. And once you put that total on the board, it's always difficult, especially under lights, to chase because of the pressure of the runs. Well, thank you very much, Amr, for your valuable input. We're all in readiness to start the game. Just about things to wrap up things here from downstairs. And I think Sikandar has made his way upstairs. He's in the comm box. Over to you, Sikandar. Thank you, Shah. Down to the last game of the Super 8 and the round stages and over to the semi-finals tomorrow. And the sides in action, both of them have qualified for the semis. It's all about finding out where do they finish. Number 1 is with Peshawar. If Karachi Whites win today, they go to number 2. And Karachi will try to do that because 2 plays 4, 1 plays 3. The usual suspects, the openers for Karachi Whites, Khurram Manzoor, Ahmad Alam. The youngster has shown a lot of promise. Another youngster alongside me. He's just joined me and I'm sure he'll have a word or two to say about these two sides who seem to be at par. They're balanced and they will produce a good contest because they played some good cricket throughout the tournament. And it's now down to that last game before the semi-finals come about. So Karachi would like to finish at number 2 if they win and play number 4. If they lose, they play Peshawar. Thank you, Sikandar. First of all,
thank you very much for calling young man a young man. So, and secondly, definitely both the teams would want to win this game and not play Peshawar in the semi-final, because the kind of side they are and the kind of form that is on display from their boys, no side will fancy playing them in the semi-finals, and that is the kind of performances they have put up. Khurram Manzoor, you can't be more experienced than that. 138 games, nearly 4,000 runs and average of 29, and lots of 50s, 29. And along with him is Ahmad Alam, the very talented youngster, one of the few batters who display good technique while executing strokes. And he's somebody who's very pleasing on the eye and has done really well through all the formats. Across formats he's played well. And definitely a lot of good things that he promises when he's batting. Uwais Anwar will start the proceedings for Rawalpindi with the ball. Rawalpindi has been asked to bowl first. This is just the second game for Uwais, so a lot of learning here for him at this level. There's a slip to start with today. So some team has started with a slip, with a catching position. We have seen the ball do a bit when the lights take over, especially the new ball for the first maybe 2 or 3 overs. And we have seen ball go to that region. And once the ball goes through, then the captains react to what happened and then they call in the slips. But Umar Amin is going to start with one of them. Yeah, he wants the side screen to be moved towards the right. That's where Khurram Manzoor is facing. Seems pretty well covered up with that bowling armour. He wants it a little more to the right. It's a great contest. You just said 138 T20s versus second T20. That's the competition here. Young Uwais is also someone who looks a good prospect. He is tall, high arm action. We saw him in Pindi extract some bounce, but then pitches in Pindi are different to what they are here. They offer you more pace and bounce in Pindi, and in Karachi they are more kind of slow compared to Pindi, and batters have a good time playing their strokes here in Karachi. There's one more thing Khurram hasn't noticed, and that is just right behind the bowler. There's a kit bag and other fielding equipments right in front, so probably noticed that in a while. Play, says umpire, and here comes Uwais. Straight away off the mark, Khurram and Karachi Whites with that single push down to third. Well, different strokes for different folks. Some of them really don't like anything moving behind the bowler's arm, and some of them are pretty fine. There will be a lot of movement when you have a bilateral international game. Lots of people are coming in, walking, but yeah, we'll show you a little later with the help of our cameraman which part bothers the players a lot during full houses here at the National Stadium. But right now, Ahmad is on strike. Sikandar, you must have played club cricket in Karachi, and I have played it in Lahore. There are no screens available when we grow up. There is usually a lot of crowd behind watching us. Cars going by from the road. Cars going by. It's all sorts of stuff going on. Okay, so this is the area. We've just zoom out over here. You see the stairs next to that board. That's where the spectators walk in from. There's a lot of movement. In 2000, we had a camp over here, Pakistan under-17s, the first ever Asia Cup of under-17s. And we used to practice on those two pitches, which are from where we are on the left of this black building.
It's absolutely the same since last 23 years. Not a thing has changed over there. Talk about consistency. So that's where they come out from, the spectators, and join the stairs. So there's a lot of movement. It's not exactly behind the bowler's arm, but it's just the movement of hundreds of people just moving in and taking their seats. But I still don't forget, I keep mentioning about this Pakistan-Australia game. Steve Smith stopped the game because a buggy cam was running outside the boundary at mid-wicket, and it was bothering him. Talk about peripheral vision. Wow. He needs to play a bit of club cricket in Pakistan and all his bothering things will go away because there's so much happening around the ground. Khurram Manzoor has a 50 in this Super 8, but Salman, we've seen him just a bit touch off colour. He's got a few starts, hasn't really converted them, and you can clearly see that he's not liking the way the ball has been coming on the bat. That's the first over. 3 Karachi are with no wickets down. Those masks should be banned now. Spin with the new ball, and Nawaz is pretty known to be bowling that new ball. Did a lot of that in the UAE. Haven't really seen him doing that here for Pakistan, I'm saying. No, but here he's of course minus Shadab due to his ankle injury. He'll be their mainstay, their spearhead and spin attack. Four in the circle on the offside and a long off for Khurram Manzoor. Moving away and trying to create something in the extra cover region. If we have the visuals, we can do some dissection with what is going on with Khurram Manzoor in this tournament. Actually, the bounce hasn't been to his liking. And he's often lost his wicket while trying to play the ball across, and absolutely across, trying to play it towards square leg and even more inside than that. If he had played that with a straightish bat over mid-wicket or maybe towards mid-on mid-wicket, would have been better off. This one has been cut and cut hard through the covers, boundary, and no fielder was in a position to stop that one. I usually don't use this term long levers, but he's a tall man, above 6 foot, so he can make that much room and still put bat on it. You just feel a sense of urgency in his batting. And in recent times, and last season, he's been trying a lot of scoops, paddle sweeps, very Kevin Petersonish like. I don't know if he's been trying to do that. See how he's just moving around in that box. Yeah, that is one thing that Khurram is moving around. But how ordinary is this bowling? That you see a guy move ages before you have released the ball and you still do not flight the ball outside the off stump. You don't, yes, just following him up flatter in trajectory, that makes no sense. You are just trying to, you know, play safe. You're not in an attacking mindset. We hear a lot from these days. We hear a lot about the intent and being positive and aggressive, but that is nothing of that kind on display when ball is in hand. It's absolutely defensive bowling.
You see somebody creating room, you throw the ball up from outside his reach. Ask him to do a lot, but he is just putting in what Khurram is asking for, flat and short, so he can play his strokes. Long on, push back and mid-off in the circle. Very well done, boy. Very well done. One change for Karachi, Shahnawaz Dahan, he rested. 4 changes for Rawalpindi. Down the wicket and over extra. That's a good shot. A shot in control and played in the vacant zone in the power play. Yes, that's more like cricket. What a beautiful shot that is. Use of the feet over extra cover with the spin. 2 overs gone, 12 for none Karachi. Ahmad Alam playing inside out, extending the arms beautifully, presenting the full face. And look at those eyes. Eyes on the impact. Talk about technique and execution. Perfect there in the picture. So the batters are actually known of the fact that Nawaz is not a big turner of the ball. Relies more on what? Lengths. And that newish ball will allow you to just play the way he did. Create your own lengths as a batter. We'll come back. Awais is starting his second over. That again, that swing towards mid-wicket. That's been his undoing recent times. All right, he's beaten, but one thing was good. Previously, to the same ball, he was going over square leg. And now, he tries to go over mid-wicket. And this is better than going towards square leg. And there's also a fielder stationed over there. Have you realized today, time and again in the previous match also, the ball hasn't really come up as the batter is expecting. So many times it's gone under that bat swing. This was Fuller, and he's also come down. 1 bounce and boundary. That will give him some patience and relief. Khurram Manzoor has been itching to go. Yes, shots that are played with the full face of the bat and obviously straightish on these tracks in Karachi are the ones that you'll mostly connect. And this one was better because it was more of played with a straight bat, full face. And this will give him more confidence rather than going across the line and getting out like that. You know, sometimes when a batter is trying to make room and the bowler follows, and usually the commentator says, wow, that's well done, he's followed him. But wouldn't it be better he's made room and you just hold on to your line way wide outside the off stump? He'll never be able to come back and put bat on it. That's what I was saying when Nawaz was bowling. And with the experience that Nawaz has playing league cricket world over, and still from the time he started playing, he's still following the batter till now. Sometimes I just feel it's a muscle memory thing that the bowler just keeps following because he's maybe focusing too much on the batter's feet. Where is he moving? Where is his foot angled? Well, muscle memory relates to the kind of practice you do. But what I am talking is thinking up here in the upper story. That needs to work to change the muscle memory. Whatever you practice will eventually become your muscle memory. So what you do in practice is all that matters. These days, these kind of bats and the reach the batters have, especially the tall batters, the bowlers fear. I give width and I'll be smashed. Let me cramp him up for space. This one has taken a bottom edge. Will be a boundary. Bit leg stumpish line. Khurram is on it. That's a bad ball, yes. But I'm not really sure if Khurram really wanted to play it that fine. He's looking to go square. And it's just once again we've seen that the ball has not come up. It's taken that inside bottom part of the bat. Oh, that was quick. Sharp.
good ball. Don't say sorry. That was a good ball. It'll be a protocol concussion test. Khurram says he's fine, but the process will be followed. The doctor will be there shortly. And this is the ball, holding cross seam, banging it in, and Khurram, no eyes on the ball. And that's the reason he could not execute that. Just watch the eyes, he'll close them. Now you see, there are no eyes on the ball. And if they are not there, then you're just hoping that your ball meets the bat. Yeah, you make a point, Salman. And you see, Khurram has already gone through with the shot and the ball has arrived later. So he doesn't have that pace. Look, his hands have already gone through. It's not that he is beaten by pace. It's actually because the ball was bowled cross seam. So when the seam hits, it comes slow. And if it's hit the lacquer part of the ball, then it skids onto you. So if you watch this ball from the release point, it was bowled across seam. And the ball arrived late, and Khurram was through his stroke and also in the process closing his eyes, and all that did not help. Just watch the ball release. It is a cross seam. And see, Khurram head towards square leg. Even the ball is still to arrive. He's looking at square leg. Again, that flat horizontal bat. It's like he's playing tennis. That forehand. And gets that to the boundary. 3 gone, 24 for none. Bowling change है, right arm over. Bilawal bowling change. So there's 1 over for Nawaz. Addition into the 11, Bilawal Bhatti. Experience on his side. You talk about bowler skiddy. Here you go. Here's one of them. New ball in his hand. It's not that tall, but he can be very deceptive. Gone through. That'll be a boundary. You see the difference between Ahmad and Khurram at this point in this partnership. He's offering a vertical bat, whereas Khurram is offering a horizontal bat. You just get a feeling whenever Khurram comes in this over to face him, better be careful with that bounce. A lack of bounce rather, not bounce. Can deceive you from a good length. And now the scoring within our chat has moved to 8.4. Asa Shafiq wants 170, or he estimates 170. According to that, they're okay at the moment. Maybe another over. Let's say finish around 50 in the power play. They'll say they'll have achieved what they wanted. It's gone high up. This will take catching. Now the bowler wants it, and he's taken it. Cotton bowled, though the keeper was right next to him, but he called for it, and the confidence, everyone stayed away. We'll have a quick front foot check, the popping crease, and that's totally fine. So Karachi Whites lose their first. Have a look at this. Going across the line is what we were talking about,
Ahmad Alam does what wasn't expected of him. He goes across the line, pays the heavy price, and he falls to a very good catch, because this high, it's not easy under lights. And Bilawal Bhatti caught it like it was nothing difficult. So Ahmad Alam, the very talented boy, he goes for 8 tonight, 28 for 1 Karachi. Umair bin Yusuf back to his usual number, 3. 25 games, 78 not out. Batted well at number 6 with a one-off game. He has got a very healthy strike rate of 136.5. And he's on strike with Bilawal Bhatti at the top of his mark. One thing to the credit of Bilawal in this over is everything has been bowled within the line of stumps. And that is where the batters have to be honest. And if they want to go after him, they'll have to take a risk like Ahmad did, playing across the line and paying the price. And he's bowled ideal line and length after the first full delivery. He's been right on the money where a bowler should be on this pitch. Yeah, he's got that focus and he's got that clarity that he wants to finish everything within the stumps, not give anything in terms of width outside or anything down the leg, especially in this power play. Yeah, more than anything, that catch. I mean, for you to be, as a bowler, claiming it and asking that he wants to do it with the glove man standing, it shows that you've got some confidence backing you up and you don't want anyone else to take that catch because it's your wicket. That's a wide there. We just need one ball to destroy anything good that's going on. We just spoke about his line and length, and here comes a wide ball. So Sikandar, we have to keep our praise in check. And this one is bowled again within the stumps, and this time a quick single to Nawaz, who was at mid-off. Over gone after 4, 30 for 1 Karachi. कराची के बैटर्स क्या स्काई स्क्रैपर्स बना पाएंगे? इससे पहले हम देख चुके हैं कि कितना पोटेंशियल है इस पिच में। 360 से ज़ायद रन्स बने अब से पहले खेले गए 40 ओवर्स में, जहां पर एक मरतबा फिर प्रिवेल कर गया पेशावर। ये मुकाबला उन 2 टीम्स के माबैन है जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए, लेकिन उससे पहले ये फैसला होना बाकी है कि कौन किसके खिलाफ खेलेगा। उमैर बिन यूसुफ ने अपने इम्प्रोवाइज शॉट्स का पूरा पोटेंशियल इस सीज़न में पेश किया है। दूसरी जानिब नौजवान जहांदाद खान गेंद करने के लिए आ गए हैं। अब तक 4 बॉलर आजमा लेंगे। खुद मंजूर के कई मिसक्यूट शॉट हैं अब तक अहमर, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इंटेंट तो शो किया है, लेकिन अब देखना है कि वो किस अंदाज से नौजवान बैटर के साथ खेलते हैं और उनको खिलाते भी। या जिस तरह की शुरुआत कराची चाह रही थी, मेरे ख्याल से उस तरह की नहीं हो सकी अब तक। अहमद आलम की विकेट गिर चुकी है और मेहर बिन यूसुफ
बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं आजकल पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स जिनका नाम लिया जाता है, जो दरवाजे पे पाकिस्तानी खटखटा रहे हैं, उनमें से एक है ये। ऊंचा खेलने के लिए गए और पावर प्ले का फायदा ऐसे उठाने का तरीका है और इतना खूब कि गेंद ऑल द वे जाकर लगा के दम ले गई है। अंपायर शायद इसको चेक करने के लिए जाएं, लेकिन जाती चली गई। फ्लैट मगर भरपूर वाइल्ड स्विंग उमर बिन यूसुफ का। बिलावल भट्टी दूसरे एंड से जो अपना तजुर्बा दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बाउंड्री चेक और 6 रन होंगे मेरा ख्याल से। ये बिलावल भट्टी जिस तरह से दूसरी एंड से अपना तजुर्बा दिखा रहे हैं, वो लेंथ उन्होंने बहुत जल्दी पिक कर लिए जहां उनको बॉल करनी चाहिए, और मुश्किल कर रहे हैं वो बैट्समैनों के लिए रन बनाने में। तो ये आप देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा विड्थ थी। यस, और वही गलती जो बिलावल ने नहीं की थी इन्होंने की। इस मरतबा भी स्टंप्स की लाइन में नहीं थे जहांदार। दोनों ओपनिंग बॉलर्स ने जो है वो उनको मजबूर किया है कि वो इनोवेट करें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, और वो विड्थ और वो लेंथ। बहुत अच्छी शुरुआत की है पिंडी के बॉलर्स ने, बिल्कुल मौका नहीं दिया उनको। इनोवेट करना पड़ रहा है जिसकी वजह से रिस्क लेना पड़ रहा है, और इसी वजह से अम्माद आलम अपनी विकेट भी गवा बैठे। सो वन कर दी, जल्द पिक कर लिया और बैकफुट पे घूम के खेला। 3 गेंदों में 2 बाउंड्रीज हासिल कर लिए नौजवान उमर बिन यूसुफ ने। शॉर्ट भी थी और स्लो भी, आंखें चमक उठी। एक बार फिर जहादात, बहुत पीछे बॉल था ये, बहुत टाइम मिल गया, और इस तरह की बॉलिंग की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इस ट्रैक पर। उमर बिन यूसुफ इस टूर्नामेंट में बदले बदले नजर आए हैं और लगते हैं कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मिशन पे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जिस पे पूरा स्ट्रेच करके पहुंचना पड़ा, लेकिन माइंड नहीं किया, और इस मरतबा और एतमाद हासिल हुआ। फील्डर मौजूद है उसको लेग पर, उनके वाइडर खेले, लेकिन एक मरतबा फिर खेल गए शॉट और लगता है कि नो मैन्स एरिया में लैंड कर जाएगी। 3 फील्डर एक दूसरे के करीब पहुंच रहे थे, एक त्रिकोण बनाते हुए गेंद इनके बीच में गिर गई। थोड़ी सी बॉल तेज आई इस बार, लेंथ तकरीबन वही थी, लेकिन थोड़ा सा बॉल तेज आया। उनको जो है वो बैट तेज घुमाने की जरूरत पड़ी, लेकिन खुशकिस्मती के कहीं हाथ में नहीं गई बॉल, टॉप एज लगा। दो अच्छी गेंदों के साथ अख्तिताम किया जहांदाद ने अपने पहले ओवर का। 41 पे 1 कराची। बिजी टाइम्स है अहमद क्रिकेटिंग सर्कल्स में। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने फातिहाना आगाज किया है। नेपाल की एक टैलेंटेड टीम के खिलाफ 1 साइडेड विक्ट्री हासिल करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम मानू कावल कैमरा में अब गर्दिश कर रही है अपने उस टेस्ट मैच से पहले जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच है, और फिर ख़वातीन अपना आखिरी मैच खेलने के लिए उतर रही हैं कल न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस बात की उम्मीद कि वो वाइट वॉश इन्फ्लिक्ट करने में कामयाब होंगी। बहुत सारे फर्स्ट आए हैं उस टूर में, जहां पर पाकिस्तान पहली मरतबा न्यूजीलैंड को गेम में फिर सीरीज में हराया। एंड लेट्स सी कि क्या वाइट वॉश इन्फ्लिक्ट कर पाता है मेजबान टीम के खिलाफ कि नहीं। दूसरे एंड से फास्ट बॉलर ही कंटिन्यू करेंगे बिलावल। एक यस एंड नो का काम था, लेकिन पहुंचने में कामयाब रहे। बिलावल को अब तक कोई टाइम नहीं कर सका है बॉल। उनकी शॉट्स जो हैं वो मिस टाइम हो रहे हैं, और उसकी वजह जो है ये लेंथ है जिस पे वो बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी इमेक्युलेट लेंथ है, ना ड्राइव मारने दे रहे हैं वो सही तरह से, और ना बैकफुट पे। तो बहुत ही अच्छी लेंथ जिस पे बॉल कर रहे हैं, और ये उनका तजुर्बा है कि उन्होंने इतनी जल्दी उस लेंथ को ढूंढ लिया इस विकेट पे। लंबे रनअप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, ज्यादा कद काट के हामिल नहीं है, तो इस तरह के बॉलिंग एक्शन में कई मरतबा इंजरी प्रोन रहते हैं बॉलर्स। शॉट गेंद कर दी और खुरम मंजूर पीछे हट चुके थे, तैयार नहीं थे, मोशन में थे शॉट को खेलने के लिए, वो मुश्किल खेल पाए। याद होगा हमारे फैंस को बिलावल भट्टी कोई स्प्रिंग चिकन नहीं है, इन्होंने कोई 1 दहाई पहले अपना डेब्यू किया था पाकिस्तानी टीम के लिए। इनको खेलने का मौका मिला बैक इन 2013 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो जो पौध उस वक्त आई थी फास्ट बॉलर्स की,
उसमें सरे फहरस्त थे, उसमें उस्मान शनवारी भी एट टाइम्स इन एंड आउट करते रहे, बिलावल ने भी अपनी कोशिशों को जारी रखा, लेकिन ये दाद ज़रूर बनती है कि उन्होंने अपनी हिम्मत को कंटिन्यू किए रखा है और उसी रिदम, कंटिन्यूटी और ऑलमोस्ट शायद 5-1 यार्ड आप कंसिडर करेंगे कि वो बिलावल भट्टी 2013 के, बिलावल भट्टी 2023 के कुछ यार्ड्स कम ज़रूर हुए हैं। बाउंसर भी ज़बरदस्त फेंक रहे हैं जो कि उनके करियर के इब्तिदाई दिनों में खासा हुआ करता था। जी हाँ, इंजरीज जो हैं वो इन्होंने काफ़ी तंग किया है इनको, वरना ये जब शुरू में आए थे काफ़ी शार्प थे, ऑफ द विकेट भी तेज़ थे काफ़ी, लेकिन अब कुछ पेस बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। ये सो यूं भी जो कि आमतौर पर आप अनवर अली को भी जब देखेंगे तो वो करियर के आखिरी दिनों में नेचुरल होता है कि अपने पेस को कम करने के लिए चले जाते हैं। बड़े पेस के साथ ये वाला बाउंसर फेंका था, लेकिन इनके पेस में भले कमी आई हो, लेकिन स्टार्ट उनका उतने ही कदम का है। पेस कम था लेकिन वॉचफुल थे उमर बिन यूसुफ, और अच्छी सोच का मुजाहरा है नौजवान बैटर की जानिब से। गो के वो ही समझ बैठे थे कि इसको वाइड करार देंगे, अगर हाइट की वजह से नहीं तो डाउन द लेग साइड की वजह से। हक्का बक्का से हैं। थोड़ी स्लोअर बाउंसर थी ये मेरे ख्याल से, उंगलियां उन्होंने घुमाई हैं बॉल पे आखिर में। 4 तब्दीलियां पिंडी ने अपनी टीम में की है, इस बात की निशानदही है कि वो आखिरी वक्त तक कॉम्बिनेशंस अपने ट्राई करना चाहते हैं, बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करना चाहते हैं, और नॉकआउट में जाने से पहले मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी देना चाह रहे होंगे, आई एम श्योर। इसके साथ जमान भी गए बिग बैश लीग के लिए, कुछ मजबूरी में भी, और इसकी वजह से ये उनके लिए चांस अच्छा है कि जाने से पहले सेमीफाइनल से कबल अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लें। उमर बिन यूसुफ का एक मरतबा फिर एफर्ट का मामला था जिसमें वो कल क्लियर करना चाहते थे कवर्स को। पावर प्ले की आखिरी गेंद कई मौके पर कुछ अर्जेंसी लेकर आती है और वो बैटर्स के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर देती है। अब तक जो उमर बिन यूसुफ ने इनिंग्स खेली है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट करियर के स्ट्राइक रेट से डाउन साइड पर ज़रूर है, लेकिन जो टैलेंट दिखा रहे हैं उनके लिए इंडिविजुअली और कराची के लिए अहम है कि वो आधे ओवर्स तक एटलीस्ट क्रीज पर ज़रूर मौजूद रहे। दूसरी जानिब है एक्सपीरियंस से माला माल खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के लिए लिस्ट है क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले। फील्ड में तब्दीली, आखिरी गेंद के लिए मिड विकेट की बाउंड्री पर फील्डर लिया है, बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे हैं और एक और स्लो बाउंसर एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट शॉर्ट बॉल। थर्ड मैन के फील्डर दायरे के अंदर आ गए, दोनों फील्डर एक वी बना रहे हैं उमर बिन यूसुफ के सामने ऑन साइड पे। अच्छा इम्तिहान है नौजवान बैटर का, और करारा जवाब दिया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर दी। बिलावल के तजर्बे को खूब पाश किया पावर प्ले की आखिरी गेंद के साथ 47 पे। चूक गए इस बार कुछ लाइन उनकी, ये देखिए 2 फील्डर्स उन्होंने तब्दील किए थे, एक फाइन लेग और स्क्वायर लेग मिड विकेटिश रखी हुई थी उन्होंने, और बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी कर दी, थोड़ी सी विद मिली और काफ़ी थी ये उमर बिन यूसुफ के लिए। यहाँ कराची रावलपिंडी का मुकाबला नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। अगर आप कराची में हैं तो याद रखिए कल सेमीफाइनल्स, जिसमें कराची की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, और अगर आप इनमें से किसी के भी फ़ैन हैं, इफ्तिखार, आज़म, खुर्रम मंजूर, तो आप रुख कर सकते हैं इस स्टेडियम का, जिसमें बड़ी जगह है। गो के इस मैच के बाद फिक्सचर्स फाइनल हो सकेंगे कि दोपहर का मुकाबला और शाम का कौन कौन सा होगा, लेकिन वीकेंड और उसके साथ ऑब्वियसली बेहतरीन मौसम तो माइंड नहीं करेंगे लोग आने के लिए, और आई एम श्योर कि शायद उतना ना भी हो तो एक झलक ज़रूर दिखे, जो कि एक ज़माने में इस नेशनल T20 का खासा हुआ करता था। ना सिर्फ ये कराची, लाहौर, बल्कि रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, उन तमाम जगहों पे गया, नगरी नगरी घुमा है टूर्नामेंट, और एक मरतबा फिर एक टॉप क्वालिटी क्रिकेट के साथ अपना अख्तिताम की जानिब जाएगा। नवाज एक बार फिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहला ओवर सर्कल में किया था उन्होंने। इधर ही, वेरी वेल डन बॉय। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, बॉलिंग स्पिन तो है लेकिन देखना होगा कि कितना ड्रिफ्ट कर पाते हैं नवाज इस गेंद को कराची के पिच पे। वाइड स्प्रेड फील्डर, 3 फील्डर बाउंड्री साइड पर, ऑन साइड पे, जबकि कवर्स में 2। उमर बिन यूसुफ के लिए
इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से वो खेलते हैं। जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया है वो उनके एतमाद को आसमान की बुलंदी पे ले जाएगा। पंजों के बल गए थे ऑलमोस्ट खेलने के लिए और बाउंस पे राइट किया था उस चौके को लगाने के लिए, सेफ खेले थे। और अब एक मरतबा फिर हो सकता है कि वो अपने हाथ खोलने के लिए जाएं। कवर्स में 2 फील्डर हैं, गैप अभी भी मौजूद है एक्स्ट्रा कवर पे। इनसाइड आउट खेलने के लिए शोर रखते हैं उमर बिन यूसुफ। इधर ही ठीक है। उमर बिन यूसुफ और अम्माद आलम टैलेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी सिमिलर प्लेयर्स हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन मसाइल उनके बैटिंग में मुझे यही नज़र आते हैं कि वो अभी इनिंग बिल्ड करना अभी तक शायद नहीं आई है उनको सही तरह से। 20s 30s ज़रूर करते हैं, बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे। खूबसूरत गेंद, बहुत आगे चले गए थे खेलने के लिए, किस्मत से बचे और लंबा चेस करना पड़ा है और अच्छी फील्डिंग के जरिए से बाउंड्री लाइन से कदम पहले रोकने में कामयाब रहे। 50 रन मुकम्मल हो गए कराची के। अवैस अनवर ने खूब दौड़ लगाई थी इस गेंद को रोकने के लिए, अपने लंबे कद काट का फायदा उठाया। पावर प्ले के फौरन बाद उन्होंने 50 के करीब पहुंचाए। आउटसाइड एज ब्रेक हुआ थोड़ा सा, बॉल कमिट कर चुके थे फ्रंट फुट पे, एंगल किया बैड एंड में और खुशकिस्मती स्लिप मौजूद नहीं। इधर ही और बॉलिंग नवाज भाई और बॉलिंग बड़ी। आजम खान एक ऐसे प्लेयर हैं कराची की बैटिंग लाइन में जिनको तजुर्बे के साथ साथ अब लीग्स खेलते हैं दुनिया भर में और काफ़ी क्रिकेट अब खेल रहे हैं, फिनिश करने की एक उनमें सलाहियत आती जा रही है। ठीक है, शाबाश 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 बॉय। 7वें ओवर के इख्तिताम पे 53 पे 1। आजम खान का जैसे मैंने ये आपके स्क्रीन पे आजम खान जिक्र किया, फिनिशर एक बहुत अच्छे, और इन्होंने पिछले मैच में इनिंग भी इस तरह की खेली कि जहाँ पे न सिर्फ उन्होंने कंसोलिडेट किया और उसके बाद मैच को फिनिश किया, बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा। इसी तरह उमर बिन यूसुफ और अम्माद आलम से भी हम ये अब तवक्को करने लगे हैं, इतने ही तजुर्बेकार वो भी हो गए, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो न सिर्फ अपने टैलेंट की बुनियाद पर वो टीम में आए बल्कि परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे आए और बल्कि रहें टीम में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टैलेंट को जो है परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए और अच्छे इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो इम्पैक्ट क्रिएट करें आपकी टीम के लिए। आपकी अगर टीम को मैचेस नहीं भी जितवाते, अगर आप ओपनिंग ज़ाहिर है दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो एक प्लेटफॉर्म ज़रूर सेट करके दें। मेहरान मुमताज़ इस बीच में आए हैं गेंद करने के लिए, 18 विकेट्स वो हासिल कर चुके हैं। बड़ा खूबसूरत आपने चर्चा किया और उतने खूब लग रहे थे आजम, रॉक स्टार हैं, क्राउड के फेवरेट हैं, जितने यहाँ पर आते हैं उनमें से 90% आजम के शॉट्स देखने के लिए और उनके एक मरतबा वेव कर देने के लिए बेताब होते हैं। और बड़ा इस टूर्नामेंट में उनको राइस मिला है जिस अंदाज से उन्होंने अपने गेयर्स को चेंज किया बैटिंग के दौरान। दरमियान के ओवर्स में उन्होंने तहम्मुल के साथ भी खेला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जो एक दिन पहले मैच खेला गया उसमें तो 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन उमर बिन यूसुफ ने पूरे कुव्वत के साथ रवाना किया है और गेंद बॉडी के पार जा गिरी। इस्तकबाल किया है मेहरान मुमताज की स्पिन का छक्के के साथ। बहुत ही अच्छा शॉट, बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया मेहरान को, पहले ही बॉल मेहरान का जरा सी उनको एयर नजर आई, कदमों का इस्तेमाल और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल सीधा, सेफ एंड स्ट्रेट। एक निगाह फील्डर पे थी कि कहीं गेंद उनके पाले में ना जा गिरे, लेकिन पूरी फ्लाइट के साथ गई है। बल्ले के एंड दरमियान से अब भी नहीं खेल पाए थे मेहरान मुमताज, जो कि अपने अभी भी करियर के इब्तदाई दिनों में है, लेकिन इससे ज़्यादा पहले जब इब्तदा में आए थे तो पेस को वेरी करते थे, लेकिन ये लगा है कि पिछले चंद दिनों के दौरान ख़ासतौर पर सीज़न में कि कुछ तेज़ी के साथ उन्होंने गेंद करना शुरू किया। इसके बाद बैट्समैन को भी उनकी इस लेंथ को रीड करने का मौका मिल जाता है, लेकिन पहली गेंद पर ऐसे अगर आप चढ़ के खेलेंगे तो बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पार्टनरशिप की अभी भी ज़रूरत है कराची को। फिलहाल 24 पे 32 बने इस दूसरी विकेट के लिए। एक्सीलेंट मैरी, एक्सीलेंट बॉय। थोड़ा सा टर्न हुआ है बॉल मेरे ख्याल से। पिछला बॉल भी अगर आप देखें उन्होंने चाइनामैन की तरह बॉल करने की कोशिश की थी, और ये वाली बॉल देखिए खुर्रम मंजूर ने थोड़ी जगह बनाई थी, स्पिन हुआ लेकिन उसको कलाइयों
के इस्तेमाल से गैप में खेल दिया सिंगल के लिए. गुड थिंकिंग. अब तक उमर बिन यूसुफ की उन्होंने हर छक्के के बाद कोशिश नहीं की है उसी सुपरसोनिक रेट को कंटिन्यू करने की. 5 बॉलर आजमा रही हैं अब तक उमर अमीन ने, रावलपिंडी के कप्तान. मुसलसल स्टंप्स को एक्सपोज कर करके खेल रहे हैं और सिंगल्स भी निकाल रहे हैं. 10 रन बने मेहरान के पहले ओवर में. कराची वाइट्स 63 पे 1. बस होता चला गया नहीं. Well done, boy. Well done, Nawaz bhai. Well done, boy. So now for the next 4 overs, you'll get the real flavor of Karachi versus Rawalpindi, because in the com box we've got Shah Faisal from, he's from everywhere actually, but today he's from Rawalpindi. In the green corner. Yeah. Pindi is wearing green. Where's your blue, Sikandar? I'm all over the place. This is Karachi. Cut away. Great contest this. We've been saying it for the start of the game that these two sides are pretty much balanced in terms of their own combinations. A good spin option, good open batters, power hitters available to both of them. And you expect that. It's the last game of the round, and then you've got those semi-finals lined up tomorrow. Khurram Manzoor called for a helmet midway through the over. That's for your comments. It's not for the spinner. It's the comments you'll be making now. That's played over mid-wicket. You call it a slog. It's got the desired result. How are you feeling, Shah Faisal? Yeah, that's the home crowd as well. You can see the energy in Sikandar's voice. There was plenty of energy from Umair bin Yusuf. He's a very talented young batter. He's used his feet and then he realized he's not going to go to the pitch, so he just went down on one knee, but still went through with the shot. Low center of gravity gives him a good balance. Yeah, that's good cricket. Maximum, then a single. Yeah, some good crowd in here. They've come to support the home side, which is Karachi Whites. And they're looking good with 71 for 1. You must be feeling lonely. No, Zia is from Rawalpindi. We got some support here, but not much. Oh, yes, out. That's got to be out. He's completely missed it on pace. That is just a very soft dismissal. Khurram Manzoor again trying to play that horizontal bat shot. He's been hit on the back leg. That was dead in front. Completely bamboozled by the pace of Nawaz. He went through with the shot before the ball had even arrived. You see, he went down on one knee pretty early. Look at that. He's through the shot. The ball never arrived and struck him well in front. I've been saying that through and through. The bounce is not enough which he wants or is expecting. So many times he's got that inside edge, bottom edge, or the ball has just passed under the bat swing. And again, same thing happened this time. Whether it's a fast bowler or a spinner, you're better off playing straight in the V.
There you go. Big back lift. The ball never arrived. Halfway through the shot, he realized that, but by then it was too late. No point going down the wicket for a Manzoor, because you have to go even further as he hits the dugout now. Karachi 71 for 2. Danish Aziz, the new batter in. He's the middle order dependency that Karachi Whites have. He's played a couple of good knocks. He's doing very well with the ball for his team. And he's got a job on hand because still 11 overs to go in this innings. You made a good point, Sikandar, when Khurram got out. It's not just the pace, but also the bounce. He plays over the top of that delivery. Just imagine if the bounce was enough, he would have made connection. And it's not the low bounce. It's just about improvising and understanding what the bounce is on this surface. I don't know if we have that footage, but in the first few overs when he was trying to play Oves on the onside, the ball would just pass under the bat. And whenever you offer a horizontal bat, then you have a minimum chance of connection, because covering the line would be much better with a straight bat. Yeah, that's the key on these slow, low pitches. You're better off using the full face of the bat, whether on the front foot or back foot. There you see again, evidence is gone under the bat again. You're on thin ice when you're playing like this. Horizontal bat, and it just goes on the inside, under part of the bat, and hits on the leg. Little bit of byplay, but yes, Sikandar, I can think of the great Inzam Amul Haq or even Babar Azam. Sometimes when he's playing the spinners, he backs off and uses the full face of the bat to hit them through the onside, and that minimizes the risk. Excellent delivery. Umair is trying to put him off with a lot of movements, but Mehran has got his wits about himself. End of the over, halfway through, 72 for 2. Halfway stage, you'd feel we've seen this similar score many times in this tournament. That's 72 for 2. We've seen this many times at the halfway stage, and we've seen innings go either way from here. So the partnership is key here. Danish Aziz hasn't had a good tournament with the bat, but this is very important time of the game. Let's have a look at what was happening earlier on in the innings, and Khurram Manzoor offering that flat bat. Look at this, a fast bowler trying to swing and it goes under. And the same story will be with the spinner. Same trying, mid-wicket area, square leg area, under the bat, and this time in front of the stumps. And that's just one evidence. It has happened on more than 4 times, 4 occasions, not just this match, the previous game also. And you would hope that Khurram... Bat, bat, bat. There's a bat in it for sure. I heard 2 sounds. Was it bat on the ground or bat on the ball? Because there were 2 noises for sure. I just feel there was a huge deflection onto his leg. Yeah, he's played it onto his leg.
Mubassir wasn't sure himself. It's just over the keeper's reaction. Hand on hips, he don't think it happened, but good decision from the umpire. At the same time, I did think that still the bat also hit the ground, but there was a deflection, right? Excellent decision. Very well done. Here's that big shout again. Yeah, the bat hit the ground and the ball as well. There's a bit of turn, yes, from Mubassir. Don't know. Again, the previous ball, Danish as he's played for the bottom part of the bat, just keeping low. So you're just tossing it up, and nothing's much happening in terms of that bounce. Like I just mentioned, Sikandar, this stage we've seen innings falter between over number 7 and 15. Now we see spinners coming into play. There is lack of bounce. You really have to be at your best as a batter to negotiate that phase and keep building that platform to launch in the end. Isha, I'm not really sure if it's really lack of bounce, if that's the correct word, if we use it. Because the ball has hit him pretty high. The only thing is that they're not improvising, expecting a spongy bounce. Why? Yes, it may be a little low according to the length. You'd expect that the ball would come up at least waist or around your upper thigh. 75 for 2 after 11. They don't want to lose their way from here. They were opted to bat first. Some crowd is coming because weekend is starting now, and we're into the semis and final from tomorrow. And the weather is good, they'll come in. And if Karachi makes it to the final, then even more people. Just to remind our viewers that both Rawalpindi and Karachi have qualified for the semis. It's just about deciding on which position do they finish in the top 4 after this match. He can afford to do that because he's been in good touch. And that's one way of just putting the bowler off on the very first ball. Omer has shown great versatility batting in the middle order. Left arm spinners, or both the spinners actually, had really tied the scoring rate down. Omer felt the need to do something about it, and that's where very calculated risk, but he smashed it out of the middle of the bat. It wasn't just a gentle tap, it was a proper switch hit. Omer looked comfortable doing it. But here there's more turn. I mean, Mehran, we all expect him to turn the ball. He's tall. He's got very long fingers as well. He puts a lot of work on the ball. It's beautifully bowled. Coming back to that Pindi-Karachi rivalry, how are you feeling, Sikandar, right now? 11.3, 80 for 2. Where is this innings heading? I'm totally relaxed. This is heading the way it should be. 170 is what Asad Shafiq wanted. I feel the kind of stuff that what we're watching from the surface. 150 will be a fight. The Ghulam Mudassir, Sohail Khan, and then you have some spin options. It'll be good. It'll be a good contest. It means that the Pindi skipper was reading the pitch right when he mentioned 150 at the toss. Anwar Ali is also there. Six runs, looking like a good over. He needs to finish well. Last ball. Oh, edge. Don't blame Mehran Mumtaz for that. But Karachi would take it. 10 of the over. 12 gone. 85 for 2. Beautifully bowled. Mehran would feel that there is no luck for him in this game. Completely defeated Omer bin Yusuf. But that found the edge. Bounce as well on that occasion. Turn and bounce. Runs should be at a premium. And 4 crucial runs for Omer bin Yusuf. 12 gone, 85 for 2 Karachi.
कदमों का इस्तेमाल करके गैप तलाश करने में कामयाब रहे हैं। बड़ा लंबा चेज है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत दूर से खेले थे मुबस्सिर के खिलाफ। ऑफ स्पिनर की गेंद दानिश से दूर जा रही थी लेकिन अपनी रीच का फायदा उठाया और ऑल अलोंग द कारपेट चौके के लिए निकाल दिया। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। गेंद जरूर थोड़ा दूर करने की कोशिश की थी लेकिन जितना रूम बना लिया था, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, वहां से पावर जनरेट की और जोरदार अपील लेकिन गेंद क्लियरली लेग स्टंप को मिस करती है और इसको रीड करने में कामयाब नहीं हो सके थे दानिश, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ठंडा गर्म गुजारा है। अभी ज़रूरत है कराची को एक अच्छी इनिंग्स की, ना सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि इसके साथ साथ आगे जाने के लिए सेमीफाइनल्स में विद द एंगल चली जाती। रॉन्ग वन अच्छी की थी जिसको रीड करने में बैकफुट पे कतई कामयाब नहीं होते। और दूसरी जानिब है उमैर बिन यूसुफ, जिन्होंने एक और अच्छी इनिंग्स का मुजाहरा पेश किया है और नौजवान बैट्समैन के लिए आज मौका कि वो अपनी निस्फ सेंचुरी को हासिल कर पाएं, जो कि उनके लिए माने रखेगी। 40s में स्कोर बनाते आए हैं इस टूर्नामेंट में। पॉजिटिव इंटेंट नजर आई है आज, बेहतर कनेक्शन भी नजर आया उमैर बिन यूसुफ की जानिब से। स्पिनर्स को आ रहे हाथों लेते हैं, दानिश भी एक्स्ट्रा कवर निकल के खेलते हैं, इनका फेवरेट शॉट है, बैकफुट भी जाके मिड विकेट खेलते हैं। और एक मरतबा फिर गैप निकालने की कोशिश है लेकिन इन दी एंड पहुंच पाएंगे हैदर। एक ही रन बनाने का मौका मिल सकेगा। अब तक टॉप स्कोर किया था 78 का उमैर बिन यूसुफ ने डेरा मुराद जमाली की एक निस्बतन कमजोर अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन ये वो मैच है जिसपे इनके अगले सेमीफाइनल पे खेलना दाव पे लगा है। मुबस्सिर का चौके के बाद अच्छा कमबैक, 9 रन दिए इस ओवर में, 92 पे 2 कराची। ये आखिरी मैच है सुपर 8 स्टेज का और साथ साथ टपाल टी का यह दौर चलता रहेगा। आप आइए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि चाय हमारे ऊपर है, आप आके खुद लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर है कि तमाम माहौल में आपको तरोताज़ा करके रखेगी। सेमीफाइनल के कल मैचेस हैं, साथ साथ एक मरतबा फिर याद करा दें कि क्वींसटाउन में कल पाकिस्तान की टीम ने खेलना है अपना आखिरी मैच। अंडर 19 में फतह हासिल कर चुका है और साथ साथ टेस्ट क्रिकेट की भी आमद है, तो हर तरफ से एक लग रहा है कि क्रिकेट की बहार आ गई है मरीना इन दिनों में। काफ़ी बिजी सीजन जा रहा है और आगे भी काफ़ी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच भी स्टार्ट होंगे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान वुमेन्स टीम के ODI वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ सेमीफाइनल का आगाज़ होगा कल। अच्छे मैचेस रहे आज सुबह में और साथ साथ PSL की रिटेंशंस भी अनाउंस की जा चुकी हैं और अब ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो पिछले 1.5 हफ्ते के दिन गुजरे उसमें रात में से लेकर सुबह तक सूरत हाल चेंज हो सकती थी। ट्रेडिंग का दौरा रहा और साथ साथ वो मैनेजमेंट जो कि अपने प्लान्स को हतमी शक्ल दे रही होंगी, उनके लिए इनमें से कौन से खिलाड़ी चुनने का वक्त आया चाहेगा, ये बड़ा अहम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्लॉट्स नहीं होती हैं। उमैर बिन यूसुफ कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल चुके हैं लेकिन उस स्टेज पे अपने आप को प्रूव करवाने में शायद उतने कामयाब नहीं हो सके थे। आमतौर पर इसी अंदाज की पिचेस पर ऐसे टूर्नामेंट का आगाज़ होता है जिसमें आपको बैक टू बैक क्रिकेट खेलनी पड़ती है और थकी हुई पिचेस पर भी अपने रन्स को फ्लो को दिखाना पड़ता है, तो अच्छा मौका इन तमाम खिलाड़ियों के लिए अपने मेटल को प्रूव करने का। जांदाद एक ओवर में 11 रन दे चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं मिडिल के और हमने देखा है कि अमूमन यहाँ पे स्कोरिंग रेट थोड़ा सा नीचे ज़रूर आ जाता है। 7.06 की औसत से अभी स्कोर चल रहा है। उमैर बिन यूसुफ की अहम इनिंग्स है ये, 4 रन की दूरी पे अपनी निफ सेंचुरी से। दानिश को भी एक्सीलरेट करना पड़ेगा, बैटिंग मौजूद है कराची के पास। उमैर महमूद आज विकेट कीपिंग के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं। उमैर से कुछ ही दूरी पे 5 कदम पीछे वो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त कराची के सबसे मशहूर उमैर हैं उमैर बिन यूसुफ। और इस गेंद को ऊंचा खेलने की कोशिश की है लेकिन अपने आप को मुश्किल में धकेल दिया। 50 के दहाने पे थे। हार्ट ब्रेक नौजवान उमैर बिन यूसुफ के लिए और बड़ी कामयाबी रावलपिंडी की खातिर। ऑप्शन अच्छा था, इम्प्रोवाइजेशन करने का इनका पूरा इरादा था लेकिन एक्सिक्यूट अच्छा नहीं कर पाए। जांदाद ने बैक ऑफ द हैंड ये डिलीवरी की, लैक ऑफ पेस था जिसकी वजह से इन फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाए। लेंथ भी मिल गई थी, खिलाड़ियों का भी इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ पे
अपनी विकेट गवा बैठे। अगर थोड़ा सा पेस इस डिलीवरी में होता तो शायद ये निकल जाता फील्ड के ऊपर से। अच्छी इनिंग्स के लिए, बहुत अच्छी इनिंग्स, लेकिन अपने 50 रन इन्होंने मिस किए। 46 पे वापस उमर बिन यूसुफ 3 का नुकसान उठा बैठे हैं कराची 93 पर। हिटमैन आजम खान अब चले हैं क्रीज पर ज्वाइन करने के लिए दानिश को। और ये जो क्राउड की आवाज़ें आपको हमारे अक़ब में आ रही हैं, ये लगता है ये कि 99% इनकी इनिंग्स को ही देखने के लिए आए हैं। इस मैच के आगाज़ से कल या जब वो इवन ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्राउड उनकी एक एक मूवमेंट पे निगाह रख रहा होता है। इस जवां उम्री में इन्होंने ना सिर्फ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रखा है बल्कि इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स से अपने PSL के सफ़र की शुरुआत की। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कैरेबियन प्रीमियर लीग में गयाना अमेजोन वॉरियर्स, 136 मैचेस कुल इन तमाम टीम्स के लिए जाके, बारबाडोस रॉयल्स, और इसके अलावा ऐसे ऐसे मुश्किल नाम है कि पढ़ना भी मुश्किल। सारी दुनिया में खेल चुके हैं, 2600 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, लेकिन वो जो नज़र रखने वाली चीज़ है वो इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो चीज़ अच्छी रही है, मनीला में इन्होंने अपने गियर्स को चेंज ज़रूर किया है और इनिंग्स को फिनिश भी करने के करीब आए हैं। बिल्कुल, इनसे जब गुफ्तगू हो रही थी जगह पर खड़े खड़े गैप तलाश करने की कोशिश की और उसके बाद जो वाइल्ड सेलिब्रेशन आपने देखी, वैसे ही खिता फोटोहार से रावलपिंडी के इन खिलाड़ियों को ताल्लुक है। जंगजुओं की वो सरजमीन है और उसके बाद नाम भी जहांदाद खान, लगता है कि कुछ रोब भी तारी हो गया था, लेकिन उमर बिन यूसुफ को शायद वक्त गुजारने का मौका था। उन्होंने अपनी गेंद को ठीक पिक कर लिया था, लेकिन शॉट गलत खेल बैठे। और आजम से आपने बात की थी, हो सकता है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उन बातचीत को मिस किया हो, तो उसके अलावा भी अगर आप कुछ वाजे करना चाहें कि क्या एम्बिशंस लग रहे हैं आजम के। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ों पे इनसे गुफ्तगू हुई, स्पेशली जिस किस्म की क्लीन हिटिंग ये करते हैं। इन्होंने इस चीज़ पे इनसार किया था कि इनकी टेक्निकल जो करेक्टनेस है उसकी पे इनसार किया था कि इनकी टेक्निकल जो करेक्टनेस है उसकी वजह से इनको हिटिंग में हेल्प मिलती है। अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और उसी में इम्प्रोवाइज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपनी शॉट्स को। और एक चीज़ जो आम तासुर दिया जाता है कि शायद फिटनेस पे ये इतना नहीं ध्यान देते होंगे, इन्होंने ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो कम्युनिकेट किया था कि ये लोअर बॉडी के लिए जो फिटनेस करते हैं वो बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बेस इतनी स्टेबल रहती है कि ये जब भी हिट करने जाए इनका हेड स्टेबल होता है, बेस अच्छी होती है, उसकी वजह से ये क्लीन हिटिंग कर पाते हैं। तो जो भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं जो एज अ हिटर अपना रोल अपनाना चाहते हैं, जो इनको आइडियल मानते हैं, इन चीज़ों पे अगर काम करेंगे तो ये वो सारी की है पॉइंट्स जो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने पे आमादा करेंगे। स्विंग एंड अ मिस, शानदार ओवर जहांदाद का, 3 रन दिए, मोमेंटम तोड़ा और विकेट भी हासिल की। 95 पे 3 कराची। आखिरी 6 ओवरों का खेल अभी बाकी है और 95 टारगेट जो असद शफीक ने सोचा था वहां तक जाने की सहलियत बिल्कुल रखते हैं। दानिश अभी खेल रहे हैं, आजम है, असद और अनवर, सुहेल भी लॉन्ग हैंडल का यूज़ कर लेते हैं। अब देखना यह है कि आजम खान अपना गियर कब चेंज करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा एक ही ओवर में इन्होंने गेम बदल दिया था। स्पिनर्स लगाने का रिस्क लेंगे या नहीं, मेरा ख्याल है कि उमर अमीन ने लिया है। ये एक ब्रेव कॉल होगी, हमने पहले भी देखा है। दानिश भी अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को और आजम तो वैसे ही आड़े हाथों लेते हैं। स्पिनर ही है नवाज, अपने आखिरी ओवर के लिए 3 ओवर में 23 रन दिए नवाज ने। दूसरी जानिब दानिश को उनकी इस लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के खिलाफ उतरने का मौका मिलेगा। अब तक 10 पे 10 बनाए हैं, सिर्फ एक चौका थ्रू द कवर्स लगा पाए हैं दानिश। बड़ी मुश्किल से गैप को तलाश किया था। रूम बनाकर खेलने के लिए गए, बैकफुट से शॉट उठाया और इतना जेट फ्यूल है कि जाती चली गई। स्टाइल में लगाया शॉट को, 100 मुकम्मल किए कराची के। इसी बात का मैं तस्करा कर रही थी, क्योंकि दानिश और आजिम दोनों स्पिनर्स को बहुत ही महारत के साथ खेलते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं दोनों। और इन पिचेस पे हमने देखा है जब भी बैटर्स ने सामने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की, अच्छा कनेक्शन हासिल किया, क्योंकि थोड़ा सा आगे गिरा हुआ गेंद था, लेकिन अंडरनीथ जाने में कामयाब हुए और एलिवेशन और डिस्टेंस दोनों हासिल किया। और अब आगे आए हैं, जोरदार अंदाज से उठाकर खेले, लेकिन इसको सेफली कलेक्ट कर पाएंगे मेहरान मुमताज। ये वो दानिश हैं जिनके इन परफॉर्मेंसेस के बायस वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होने में भी, खेलने में कामयाब रहे थे, लेकिन वहाँ पर इनका सफ़र खातिर खा ना गुजर पाया। और उसके बाद इन्होंने एक यादगार इनिंग्स अबू धाबी में कराची किंग्स के लिए भी खेली,
लेकिन उससे पहले और बाद में उतना मुतासर नहीं कर पाए जितना इन्होंने कराची की इस क्रिकेट में इम्प्रेस किया। आजम अब तक बड़े शॉट की तलाश में है, शायद वो भी कवर्स की जाने भी जाएं। इस बार बचत हो गई है नवाज की। नासिर नवाज की जानिब शॉट खेला था आजम ने, कैप नहीं हासिल कर पाए। नजरें निगाहें इनकी ढूंढ रही हैं कि कहां पे बाउंड्री ऑप्शन पिक कर सकते हैं, क्योंकि अटैक करने जाएंगे नवाज को। वो कदम आ गया कराची के हिटमैन ने दिलकश चौका लगा दिया और उसको ऑलमोस्ट उतने ही दिलकश अंदाज से नौजवान फील्डर ने कैच भी कर लिया था। आ गए आजम कराची में और कदम भी जमा लिए। बहुत ही शानदार शॉट थी ये, टिपिकल टेक्स्ट बुक शॉट है ये। इनसाइड आउट स्पिनर के अगेंस्ट रूम दिया, थोड़ा सा लेग साइड से नीचे उतरे लेकिन पिच से दूर नहीं गए, सिर्फ इतना रूम बनाया कि एक्सटेंड करके लाजवाब टाइमिंग के साथ बासानी बाउंड्री क्लियर करें। ये महंगा ओवर साबित हो रहा है। लेट खेले हैं चलाकी के साथ, लेकिन पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे बिलावल भट्टी। आज की शाम की खास बात मरीना ये है कि फील्ड के अंदर तो जो हलचल है, जो बाहर बॉल पिकर्स हैं वो भी बड़े आज गर्विदा हैं गेंदों को उठाने के। कभी दाएं गिर रहे हैं, कभी बाएं गिर रहे हैं। तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि इस सर्दी में जब आप गेंद को रोकने के लिए तैयार ना हो तो बड़ी सख्ती के साथ गेंद आके लगती है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त गर्मा गर्मी है और माहौल है कराची में इस T20 क्रिकेट के लिए, मेला अपने अरूज पे। दोबारा उठाकर खेला है लेकिन इस मरतबा वो इन सर्कल को भी प्रॉपरली क्लियर करने में कामयाब ना हो सके। महंगा ओवर नवाज का आखिरी था, 14 रन दिए और आखिरी गेंद पर एक और भी 110 पे 3 कराची। ये एक्सपेक्टेड था स्पिनर के अगेंस्ट। इन दोनों की यही हिकमत अमली होती है कि ये अटैक करने जाते हैं। अब फास्ट बॉलर्स के साथ कैसे स्पिनर्स को रोटेट करेंगे, उमर अमीन के लिए बड़ा डिसीजन होगा। प्रोजेक्टेड स्कोर आप देख सकते हैं, पहला ऑलमोस्ट वो टारगेट है जो नासिर शफीक ने मेंशन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये दोनों मिडिल में रह जाते हैं तो 11 रन पर ओवर भी ये जा सकते हैं। 165 का टारगेट भी अबूर हो सकता है। कंट्रास्ट है दोनों खिलाड़ियों के बैटिंग स्टाइल, एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड। ऑब्वियसली इनकी फिजिक में भी और उसके साथ साथ गेम की अप्रोच पे अपनी पार का इस्तेमाल करते हैं आजम, जबकि दानिश अजीज़ वो कदमों पे हल्के फुल्के हैं, फ्रंट फुट बैक फुट पे आसानी के साथ अपने वेट को शिफ्ट करते हैं। गो के उनकी बैटिंग में जो एबिलिटी जो कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इस क्रिकेट के बाद उनको लेकर आई थी, इस बड़े सीन तक वो कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने आप को इन द हंट रखा है इस बिग लेवल क्रिकेट के लिए। मेहरान मुमताज़ अपने आखिरी ओवर के लिए आए हैं, आज अच्छी बॉलिंग की है, बैट्समैन को बीट करते रहे, खासतौर पर खुर्रम मंजूर को उन्होंने कई मरतबा डाउन द लेग साइड बीट करवाया। तैयार कर चुके हैं ऊंचा और तेज जाने के लिए। एक रन इम्तिहान होगा ये मेहरान मुमताज़ का, स्पेशली आजम के खिलाफ, कि किस पेस से बॉल करते हैं और किस लेंथ पे। हमने देखा था कि अगर कहीं भी पैड्स के ऊपर बॉल जाता है तो वो ट्रेवल करता है बाउंड्री के बाद, और इनके पास इनकी खासियत ये है आजम की कि इनके पास रेंज ऑफ शॉट्स ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा देर और किसी एक एरिया में इनको खामोश रख नहीं सकते। इसलिए कुछ चेंजेस हमें फील्ड में नज़र आ रही हैं और परफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट चाहिए इनको। गो के अपने करियर के इस हिस्से में मेहरान मुमताज़ बड़ी तेज गेंद करें, लेकिन आज इन्होंने अपने पेस को वेरी किया है। कई मरतबा उन्होंने लगा यही कि एयर भी देकर गेंद को टर्न करने को अलाउ किया है और उसके बाद शायद बैटर को उतना आसान नहीं लगा है कि वो लेंथ को जल्द पिक करने के लिए जा पाएँ। दानिश अब अपने लाइसेंस को हासिल कर चुके हैं, ग्रीन लाइट उनके सामने। एक मरतबा फिर खींच के गेंद की है दानिश की सदा को जांचने के बाद कि वो बढ़ा जाएंगे, सिर्फ 1 रन के लिए खेल पाए। मेरा ख्याल है हिकमत अमली यही होगी कि आसिम को भी थोड़ा तेज़ गेंद किया जाए, बैक फुट पे उन्हें पुश किया जाए, क्योंकि अगर तो इनको लेंथ दे दी और थोड़ी सी भी फ्लाइट दी तो फ्रंट फुट पे आके बासानी बड़े रन्स बना लेते हैं। वंस अगेन उठाया है, खतरनाक अंदाज से खेले हैं और ऑलमोस्ट कैच भी हो पाए थे, लेकिन ठीक वक्त पे ना पहुंच पाए यासिर, जिन्होंने डाइव लगाई, लेकिन गेंद उंगलियों की पोरों के करीब से होते हुए चौके के लिए रवाना। हमने पहले मैच में भी देखा
कि इस तरह के हाफ चांसेस बड़े मैचेस में आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं. मेरा ख्याल है कि यहाँ पे यासिर ने गलती ये की कि पिक नहीं किया, एंगल कट नहीं किया, बाउंड्री की तरफ ही ये जाते चले गए. अगर थोड़ा सा आगे की तरफ आते तो बॉल डिप जरूर कर रहा था, लेकिन आसानी से पहुंच जाते. एक और स्पिनर एक और कोटे को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद 4 ओवर बाकी रह जाएंगे. वेस्ट अनवर ने 2 में 14 किए हैं. बिलावल भट्टी का आज शानदार स्पेल रहा है, जिन्होंने T20 क्रिकेट में वापसी के मौके से भरपूर फायदा उठाया. 2 में उन्होंने 12 दिए. कैलकुलेशन के हिसाब से वही गेंद करने के लिए आएंगे. आखिरी गेंद मेहरान के स्पेल की. दानिश फिर कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत आगे आ गए थे. गश्तियां जला के और गेंद चौके के लिए चली जाएगी. नहीं, देखना होगा कि क्या इनका फुटवर्क बेस्ट था. हो सकता है कि टेलीविजन अंपायर इन एक्शन आए. जितनी खुशी रावलपिंडी के खिलाड़ियों पे है, लग रहा है कि वो चौका रोकने में कामयाब हो गए. बाउंड्री शेक की तरफ जाएंगे अंपायर्स और अच्छी एफर्ट होगी अगर ये कंटेन कर लेते हैं बाउंड्री, क्योंकि बड़े ओवर की तरफ ये जा रहा था. हमें अक्सर देखने को ये मिलता ज़रूर है. यहाँ तक मामला सही हैं, आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा. गैदर जानदाद ने अच्छा कर लिया. मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे बाउंड्री कंसीड की है. अच्छी एफर्ट इन फील्ड. अभी पहले ही हमने देखा था कि एक हाफ चांस को नहीं अवेल कर पाए, लेकिन यहाँ पे चौका रोकने में ज़रूर कामयाब हुए. 120 पे 3 कराची वाइट्स. It's a very, very tight contest here. Run making hasn't been easy. But if you're a Karachi captain, you could not ask for a better man to be in the middle, and that is Azam Khan, who's got himself a start again. 14 of 9. Danish is hanging in there. Crucial phase of the game. Last 4 overs. It could be make or break for both teams here. Bilawal Bhatti will bowl this over. Azam was looking to move away. Thought he had the right ball because there's no one on third. Bit of extra bounce, I think. And, the stage is set now for Azam and Danish. Last few overs, and with Anwar Ali to follow, he must be looking at something like 140, 60, 50 or 60. That would be very competitive. Pace on, plenty of pace up the bat of Azam Khan, and it lands in the stands. Monstrous hit from the big man. Excellent shot that Pindi has bowled well so far, but it will now be these last 4 overs which will determine how they finish. And look at that one. That's too easy for Azam. Big hit over mid-wicket, 6. Bilawal is trying to bowl quick. That may just work in Azam's favour. Look at how far that ball went. Gave himself some room. The length was there. The good thing is that he just held his stroke for a little bit longer because of the slowness of the pitch. But like I said, Bilawal's extra pace made it easy for him. Huge challenge now. There's a mini conference. Umar Amin has talked to Bilawal. Bilawal is an experienced man. I don't think up bowling to Azam Khan is going to be easy. Yes, Bilawal has bowled that length, very good length from the start. But now in these last 4 overs, when both the batsmen are looking to go big, he will have to do something
different. He will have to change his pace, vary his length as well, not to be too predictable. That bouncer into the pitch. That was a very, very well executed delivery. Azam is not happy with the height. Azam immediately looked at the square leg umpire to see if that one went over the head or not, but nothing doing, says the umpire. I think it went between his head and shoulder. Probably just about the right height. Azam still not happy. Don't make him angry. Oh, excellent. Umar Masood. Really wonderful work there. Brilliant glove work there. Excellent reflexes. Inside edges, never too easy to collect. And look at that. Very quick. Eyes on the ball. Brilliant work. Razor sharp reflexes. He was wrong-footed. Obviously, he was covering the line of the ball. Inside edge meant he had to go to his left, not his natural side, but he did it beautifully. Umar Masood, rather. Oh, that was a low full toss. How did Azam get so much bad on it to get a couple of runs? Is incredible, but that's good from Bhatti. Yes, that is the length I was talking about. He will have to vary it, and he's doing it now using all his experience. That one nearly in the block hole, very low full toss, very difficult to get away. Very difficult to get under to go for those big hits. He needs to finish it good. Swing and a miss, kept low. That's a very, very good comeback by Bilawal Bhatti after getting hit for that 6. Just 8 of the over. 128 for 3. Well, once Azam took his eyes off the ball, trying to hit it too hard, I think. Ball not there, not a half volley really. Missed it, luckily. It's not in the stumps. But you know, Amar, Karachi boys would not be disappointed to see this kind of bounce here on this pitch. We've seen evidence of turn as well. The runs on the board could be crucial because run making is not easy, especially with a slightly older ball after the power play. Current rate 151 would be a good score, and that's what Umar Amin mentioned. They want to keep Karachi under, but 11 and over can take them to 161, which is close to what Asad Shafiq thought they need. It's an intriguing battle. Umar Amin has marshaled his troops very well, and he's looking composed. Full toss, Danish hasn't got hold of it. And Azam is probably the right man to be on the strike. Danish will be a bit disappointed with that one. It was a full toss. Could not. Fair delivery. Jahandad got away with that. Can't afford to make mistakes of bowling no balls and free hits here. Now he's got Azam Khan waiting for him. Just dragged it with the bottom hand. It will find the fence. Sloppy work. Is it Nasir Nawaz once again? Probably not picking the ball out of the background. And valuable 4 runs to the total. That's not acceptable at this stage. Not a very bad ball. Didn't really get the kind of bat he wanted to on it. The timing wasn't there, but look at that. Oh, that was sloppy. Should have stopped that. Complaining about the lights, but I'm sure the captain won't accept that. Neither would the bowler. This time, forget about it. Azam has absolutely nailed it, and it's ended up in the stands again. Power of the man.
Oh wow, what a slap that was. Very short, and there was width also provided. Instead of going over extra cover or cover, he decided to go over mid-wicket. And wow, he did it in style. 6 more. With the amount of power that he exerts into the shots, he's got a very good base. And that base allows him to generate that power through his arms and shoulders. Full toss, he hasn't got hold of it, but we'll look for 2. Danish said no. It's not the ideal pair for running between the wickets. Azam we all know, but Danish is also not a very quick runner between the wickets. Well, it doesn't matter who is getting the runs at the moment. It's, who can hit the big hits now. Last 2.2 overs left. Went under the bat again. Danish was looking to carve it away. There's no one in the deep behind square on the offside. This is where he was aiming for, but couldn't put bat to ball. Tried to cut that one too close to him. A dot ball, a treasure in this situation. Remember, we got a small crowd, but you know the beauty is when Azam is in the middle, you could feel that buzz, and there's an air of expectancy. They want him back on strike. Last delivery of the over, Jahandad. Danish will get a single, and Azam will have to wait because Danish will keep the strike. 18 gone, Karachi Whites, 141 for 3. It hasn't been easy to time the ball really on this track. And I think anything above 160, they might be happy with that instead of 170, which they wanted to get at the start. I think even if they reach 160, that will be a very good score, with the ball keeping a bit low, spinning as well, and the pace. There is no pace in the wicket at the moment. The ball is coming slow. Azam Khan in the house. Lovely cool evening and a cup of tapal tea. That is the ideal tapal tea moment. Enjoy a sip and enjoy some hard hits. This one is not quite timed as well as Danish wanted. Oh, this is sloppy. This is absolutely schoolboy stuff. Yes, Mehran overran the ball. Nah, bowler won't be happy with that effort. Every run crucial at this stage. I'm sure it's not tactical. They're not trying to keep Azam away from the strike. There's a big shout. The big shout. It was swinging. It was a Yorker length delivery. And Umair thought it took a deflection of the bat of Danish. Not very sure if that took the edge. I don't think so, but beautifully bowled that one. In the block hole, there was, the ball did deviate, but I'm not sure if that was the bat. Yeah, it must have hit a foothold because there was a huge deviation. As soon as that ball landed, it was Yorker length, so either it was the batter's guards, the marks they make, or something, because the ball deviated quite a lot. Oh, slow delivery. Well played, Danish Aziz. He really manufactured that shot, moved right across his stumps and paid. Yes, that's good awareness. Gave himself room, showing him the stumps, and that was too short with that short fine leg up in the circle. Just had to clear that, Danish, and he did it. I think
Danish has realized that hitting down the ground is not easy when the bowlers are taking the pace off. This time he does. Rawalpindi has been hit over long on. Brings a smile out of Danish Aziz's face. He's trying to hit that block hole, missed it completely. And 150 is up for Karachi. Look at that one, trying to bowl that Yorker, missed the length. It was a juicy full toss and very well executed by Danish. Yeah, it looks like Danish has got into the head of Rawalpindi. He doesn't know what to do. He's shown his cards too soon with 2 deliveries to go. Bilawal is on the back foot. Low full toss. Forget about that. That's good batting. That's exciting. Every time a bowler misses the length, gives a loose ball, especially at the death, you've got to capitalize. That's how you do it. Well done, Danish. 2 sixes in 2 deliveries. Both low full tosses. Danish deep in the crease. Although it didn't come off the middle, but just enough bat on it. And this score is now looking very, very good for Karachi, considering the way the wicket is playing. Last delivery, very expensive over, what, 16, 18 of the over with 1 to go. Bilawal under pressure. Round the wicket. It's in the air. Not a clean strike at all. Well, to fans' disappointment, Azam will still remain at the non-striker end. 19 gone, 160 for 3. It's 19 of that one. Very good over for Karachi Whites. 160 for 3, 1 over to go. Well, I think they're very near what the captain expected at the start. 170 is on now. Danish 43 of just 25. The partnership is 67 of 34. One for 39 for Bilawal. Yeah, crowd is very noisy. Like I said, they're a very small number, but they're really making some noise here. Well, both the batsmen not very happy with the short balls and the wides not given, but I think they should get on with their job and let the umpires do theirs. Knocked him over. Full and straight. Jahandad reaps the rewards of bowling straight and send dangerous Danish Aziz back. He's played a little gem of a knock here. Yes, that was good bowling. No ball is all right. And look at that. Up there in the stumps, you miss, I hit. And that is what happened. Danish missed. Jahandad got that wicket. Danish gone for 43, 160 for 4 Karachi. Azam Khan hasn't had much of the strike for the past 8 to 10 deliveries per memory. 7 at least, because he didn't face any in the last over. And he won't be on strike as Anwar Ali is the new man in. Dangerous hitter for this kind of situation. 191 games, mighty experience. That strike rate is 143. He can bat. Let's see what Anwar Ali decides to do. Will he take a single, give the strike to Azam, or will he go for that big hit? Well, Anwar Ali had only one option in his head. He went for it, but eventually got the single, and that's what all the crowd wanted. Azam back on strike. That one again pitched up.
Very good option at the death, and tried to heave it over mid-wicket. Anwar Ali only managed to play it onto his pads. Took a single though. Now 4 balls remaining. Azam Khan on strike. Exciting. Four deliveries to go. Chance of Azam ring around the National Bank Stadium. Azam disappointed with himself. Huge grunt, but it was beautifully bowled by Jahandad. He's really bowled a good over so far. Yes, that length he's bowling is very good. Danish lost his wicket trying to heave it over mid-wicket. And then the next 2 deliveries have been up there. It's not allowing the batsman to get underneath the ball to go for that big hit. Very good bowling. Anwar Ali's favourite area is towards that cow corner. 3 fielders on the fence on the onside. He went there. The umpire might want to check. This is a high ball. And taken Bilawal Bhatti. And I think umpire wants to check the front, not the front foot, but for the height, I think, but we'll do both. Well, that's all right. The foot is okay. Let's see if that is not all right. Azam Khan is taking a huge start. This day and age, you know, monk cut is in fashion. I think Anwar Ali will be able to get away with that. Got it very high up on that bat, and let's see what the umpire decides. From here, it seems it was quite high. Anwar is a tall man, and that is on this evidence and the previous evidence. That is pretty high, and it's not dipping at all. Rawalpindi really cannot afford for it to be a free hit, and Anwar, rather Azam, will be on strike. Fair delivery. That is what the call from the umpire. Anwar is not happy. Well, he's been given out. Umpire says it's a fair delivery, and Anwar Ali obviously disappointed. Everyone is once he gets out, but a bit animated. Match referee won't be liking that. That one, full toss, lucky Jahandad that he got away with it. Anwar Ali gone for 162 for 5 Karachi Whites. सर लेग स्टंप है बिल्कुल ठीक स्वेल 2 बॉल रहते हैं Bilawal Bhatti took that catch. He also took a very good catch on his own bowling. High catches are never easy. Sohail Khan just clears Mehran, and it will run away into the fence. An untidy finish to the innings from both sides. This one wasn't a cleanly struck blow, and Mehran scrambling back, got his hand to it but couldn't quite hold on to it. Yeah, that was a back of a hand slower one. I think that was a good effort in the end by Mehran, but
Sohail had enough bat on it to clear that fielder. 1 to go. 166 for 5. What can Sohail Khan do? He ramps it. Oh, what a beautiful shot. You little ripper, Sohail Khan. He came out, and we all know he wants to have fun with the bat. Jahandad is not amused, but a grand finish for Karachi Whites. Yes, brilliant finish that one, Sohail Khan. Innovation. And a mixed over for Jahandad. Took a couple of wickets, but those 2 fours at the end, he won't be happy with them. Karachi end up with 170. It's exactly what the captain wanted at the beginning. Brilliant. Azam Khan played another very, very good knock, but it's just funny that he didn't get the strike. All but one delivery in the last 2 overs that he faced. He's walking out, not out. And 34 of 19 he made. Very, very enjoyable passage of play that was, that last 5 overs. I'm sure everyone at the ground enjoyed that. A stop-start innings for Karachi. Ahmad Alam was expected to do a lot, couldn't do much. Khurram Manzoor hung around for a while, got out at the wrong time. Umair made a very polished 46. Danish Aziz came good with the bat. That's good news for Karachi, just in the nick of time. Azam Khan was sensational again, stayed unbeaten. And Sohail Khan with that little cameo towards the back end. 170 they finished with. Here's the story of the bowling. Nawaz 4 for 38, 2 for 14 for Awais. Bilawal made a good start, bowled very well in the beginning, but that over that cost him 19 runs. 4 for 39, took a wicket. And Jahandad, I think I was a bit impressed with him, but in the end his inexperience was showing, and those 3 wickets for 37. Mehran 4 for 31, and Mubassir 2 overs and 9 runs. Tariq Afridi here, Shahid Afridi's elder brother. Well, some fireworks were expected earlier on. Khurram Manzoor started off nicely. Ahmad Alam for a brief moment, but he went early. A big scare taken by Bilawal Bhatti to take down Ahmad Alam. Khurram and Umair batted beautifully. Umair, as usual, nice square of the wicket, good use of the feet. Khurram Manzoor was taken down by Nawaz. Then this little partnership, but Umair went out in a soft way. Danish Aziz joined Azam Khan, who played some beautiful strokes. Bilawal Bhatti was under fire in that 1 over. He went for 19. Danish Aziz hit him for a couple of sixes. But Jahandad came back and got the wicket of Anwar Ali as well towards the end. That was the closing moment. Sohail Khan having some fun as Azam walks off as well. 171 is a formidable score on this pitch. We'll find out how Pindi go about it when we come back with the run chase in just about 5 minutes. Tails is the call. Karachi Whites, who won the toss, and they've decided that they will bat first and put runs on the board. Down the wicket and over extra. That's a good shot. It's gone high up. This will take catching. Now the bowler wants it, and he's taken it. Oh yes, out. That's got to be out. He's completely missed it on pace. और इस गेंद को ऊंचा खेलने की कोशिश की है, लेकिन अपने आप को मुश्किल में धकेल दिया. Pace on, plenty of pace off the bat of Azam Khan.
Welcome back to the National Bank Stadium. It's time for the reply. Rawalpindi need 171 to win this match. Karachi have got the score that they asked for, or they hoped for at the time of the toss. So it's 8.55 runs and over to get. And it is a battle in its own way, because the side that wins will finish at number 2. In fact, Karachi would finish at number 2, and they'll then probably play Abbottabad. Tomorrow are the semi-finals. Before that, one more innings before Super 8 ends. Today, Ghulam Mudassir into the side in place of Shahnawaz Dani. That's the only one change. To look out for, Sohail Khan with his swing with the new ball earlier on. Mudassir has been good, and then later on Danish Aziz has done well with the spin. So a few things to tackle. The positives for Rawalpindi are also a few in number, but they are very important ones. They've been a good side. They've been chasing well, so that's one plus point. And then they do have a good opening pair. Yasir, the one with a big 100, and he would like to repeat that. We'll come back to you with his partner. 171 to get at 8.55 runs and over. Yeah, two decent partnerships put Karachi on that 170 target. Rawalpindi, they're up against some experienced bowling. They know how to take wickets. Yasir Khan has shown a lot of potential. He can take on any bowler at will. 107 best so far, 250 already to his name. A very healthy strike rate. His partner, Nasir Nawaz, he can go big. He can really explode. Once he gets going, things can get trickier for the bowling side. But they need to build the partnership. They need to utilize the power play. That will be very important. Prolific bowler for Karachi White, Sohail Khan. He's lethal with the new ball. He will create troubles with the older one, but up front, one slip and one flying slip. Play. What a contrast. The first ball before Karachi innings, Khurram Manzoor didn't want to face the ball until everything was still behind the bowler's arm, and Yasir faces the first ball with a guy just walking around behind the bowler's arm. Isn't it strange? Khurram Manzoor has been playing T20 cricket for the longest time. From the first edition of National T20 till now, has got 130 odd games. Sohail Khan has 140. You would expect the batter having more fast bowlers usually, but since he's played quite a few leagues around as well, so he's got more. Though Khurram surely has spent more time in the arena, in the circuit, than him. Correct me if I'm wrong. It's that time of the day. Swing. Got to be a touch careful against Sohail Khan, because he's got the ability to move the ball both ways, and surely he'll rely more on that outswing. That's his genuine thing. You have to be careful. You need to pick him up, because he can set you up with two genuine deliveries, out swinging, and then he can bring one back in. So as a batter, you cannot be premeditated. You cannot be falling in that trap that he's only going to test you on the outswingers.
he can bring the ball back from same length. Run out chance, direct hit, problems, and it's completed. So a dangerous, risky single there. Danish Aziz was the fielder. Probably they took that chance. He called it the moment he played, but was on the back foot. Stall, there was a definite chance. Danish had all the time. Probably he was home. Should have looked to hit those stumps directly. Anyone else would probably pick an underarm and flick it on towards the stumps. Underarm throw. You see that again, side on. Danish picks the ball up and then he aims, take the hand back. That takes extra few seconds and then throws. You need to do a jaunty Rhodes. Forward dive and flick it. Underarm throw. And that has to be pick and release in one. There, pick up, hand goes back, aim, throw. Takes time. Yeah, we saw Shadab Khan doing that in this tournament. He's very good at it. Close-in fielders. These are the basic drills you do in your practice sessions. End of the first over with 2 runs off it. Good one from Suhail Khan. They're not going to offer you easy deliveries where you can capitalize them and turn into boundaries. So Rawalpindi opener especially, they need to sort this out. Rotation of strike, it is very important. Underrated most of the time in T20. But if you manage to do that, because now with Suhail Khan, the partner is Ghulam Mudassir, who's equally good. He's very accurate, he's got pace. He will test you with the swing. A lot of batting to come. Heather, Umar Nawaz, Umar Mubassir can bat, Mehran as well, Bilawal can hit. You just need a good start, good solid power play, foundation, and then accelerate. The only change Karachi Whites made, Ghulam Mudassir replacing Shahnawaz Dhani into the attack from that far end. It's been good. Was left out in the game which was played over here, the last one for Karachi. The intent is clear by Nasir and Yasir. They need to rotate the strike. They're looking to rotate strike. That actually sends a message to the close-in fielders to stay on your toes. Again, soft hands. Probably did push a little bit more than he should have. That's another option with the ball. Anwar Ali, who's come back into the side after that calf injury. So he's been bowling with a very short runner, but he's got enough experience to keep it within the stumps and improvise. Good finisher for them with the bat as well. But today a good partnership between Danish Aziz and Azam Khan, taking the side to a total they wanted. Oh yes, 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 yes. There's some inside part of it. I don't know if it was pitching outside leg. I think it's just on that leg stump. Straightened up enough. Yeah, he has the ability to do that. Probably the height as well. Might have another look if it was pitching outside leg or not, but he can bring that ball back into the right-handers from that middle stump. So you need to be careful. You shouldn't be falling. Chance again. Oh, and he doesn't pick it up. Anwar is a good fielder. Again, that calf. Look at that. This time it's just his right foot.
Well, they're testing the fielders. Mid-on, mid-off, mostly in equation. He doesn't feel comfortable at all. Anwar Ali, a really good fielder, especially in outfield. Got protection down there. Dealing in singles at the moment. No boundaries yet. Almost coming to the end of the second over. Now you just feel that the two batters will be feeling that slight heat. No boundaries yet, so you just hope that they don't get into some sort of silly decision, just swing without looking. But they are very much aware that it's almost 12 deliveries and not a single boundary. That's well bowled, really well bowled. 2 overs gone, 4 for none. That was expected from Karachi wide, with Sohail and not Kamran, but Ghulam Mudassir operating again. Those lines, tight lines, no room being provided whatsoever. No, single denied on this occasion as well. Rawalpindi, they need to re-evaluate the plan. They should be looking to score at least one boundary every over, because once the power play is gone, you will be dealing with someone like Arif Yaqub with his leg spin, Danish Aziz. He can be decent enough. Anwar Ali with a lot of variations. They're not going to make things easier for them. Edge and over. Who got a glove and who got a hand? But somebody tipped it over the other. It's gone for 4. Surely. I think Azam missed it and Khurram got a fingertip. Genuine edge. Good line, good length. Just a way movement that actually unsettled him. But again, it's never easy for a slip fielder. You need to keep your eyes on the ball, because the keeper will definitely try and go for it. And this time missed it, just brushing the tips. He's not happy, he never is. Yeah, it was Khurram's catch altogether. This time swinging it in. Karachi asking questions. Sohail is a smart bowler. Gets one to move away, gets that genuine edge, and then moves one in, angles it. Still no boundary. Swing and a miss, this time a little wider outside the off stump. Yeah, Sohail Khan would be feeling that the chance went down begging. Khurram, it's never easy, obviously. You need to be very alert. Keepers always go for it. But again, you need to keep your eye on the ball. And similar thing happened with me. I broke my finger, if you can see this one.
It's not the wing. It's still, it's actually Doesn't blocked. hurt, right? No, no. The same thing happened to me, and I took my eyes off, and it just got a big fracture on this one. Finally a boundary. Just beats the fielder at mid-wicket. And it goes through. First one in the third over. Yeah, you need to be patient enough against these bowlers. There will be an opportunity, ever so slightly, but you need to capitalize on it. On this occasion, he stood his ground, good, solid base. Just connecting the ball in front of his eyes, good extension of arms, and that's why he managed to get a boundary. You need to be more proactive. Just be wary of those dot deliveries. Who was the keeper who dived in front of you? Well, it was a practice game, and Naida Khan had the gloves on, which is a part-time keeper. And it was straightforward catch towards me, and she out of nowhere came in front of me, jumped over, and I totally lost the side of the ball. And it literally turned towards my, you could say, left side. It was that broken. Naida Khan. Yeah, that could happen when you're not a full-time wicket-keeper. Sometimes you make that error in judgment that should I go for it or should I not? And you just, out of muscle memory, just stick your hand out. And you block the view for that slip cordon. Or maybe she did it on purpose. She didn't like you. It could be. Oh, yes, 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 yes. That's dead in front. That's out any day. That's a big one. Yasir Khan. And he's going to take him and send him off. Yasir Khan trying to go for that shot, which he tried earlier, but this time the length was slightly fuller. And that's where he made his mistakes. No worries for Sohail Khan with that line. But again, have a look at that. The previous one, it was slight touch shorter. Wild swing, took his eyes off and paid the price. That's good to see. But Sohail Khan has redeemed himself. Big wicket this. Yasir was someone Rawalpindi was depending on to provide them a big start. Had to go for that swing because the runs are not coming in that easy. 3 overs bowled. It's 12 for 1. "125 games, Haider Ali. 91 not out his best. Strike rate very healthy. Could do a lot better than those 13 50s. Means he gets starts but doesn't really convert them. But today could be his day. He's got 2,390 plus runs. Ghulam Mudassir with over number 4. Are these the under-19s left behind? No. Well, the expressions actually say that they might be, but they're not. This is the wicket. Yeah, just trying to replicate the shot on which he got the boundary. It was touch fuller. Should have tried to play it straight. He's lucky that it went very straight. Otherwise, had no distance on it. People have come in a few numbers today because the weekend is starting. And another reason is, of course, Karachi is playing, so that's their home team. They would like to come and cheer them on. That's high on the bat. You need to be careful with Ghulam Mudassir because he's got pace and the ball at times skids on. So it's not easy to play him on the up or that pickup shot that easily.
Good ball. He's been angling it in after pitching. It just straightens up, but this time it holds its line. Just goes straight. I just love him. Love to see him bowl because he's got a lot of things to offer. Good pace on this occasion, good carry. Haider Ali was very late in attempting that shot. And there's the crowd. Early on, Peshawar was playing. Got a lot of support there. Waiting for that wicket to fall, the crowd. And then you look at them. That line, just around that fourth off stump, is just so unplayable the way it's being approached. Passes the waist area on the rise. He's stuck on crease, not covering the line of the ball, probably trying to guide it to the third. You've got a slip in place. You need to cover the line. You need to move your back foot towards off stump just to cover the line because he's bowling with some venom, Mudassir. And I think Haider has no clue, is very late. Off the mark. So just coming to the end of the fourth over, and there's just 2 boundaries in this. This power play is just a bit dried up, 3.6 runs and over. And the required, just leave that aside. It's still within grab, less than 10, but what are they doing with the power play? That's a bit of a concern, and they've lost Yasir. Courtesy some good bowling, and it won't be easy later on also. Oh, that's gone wild, wayward, and all over the place. He saw him backing up and tried to follow him and just completely lost the radar and lost the plot. Gifted run, gifted boundary. It wasn't a bad fly to follow, but you need to have some control at least. Flew away from Azam Khan. Couldn't believe it. I think that's the first vivid delivery from Karachi Whites. Straight to the fielder, and the run is completed. 4 overs gone, 20 for 1. वजह तारी है कराची के शाकीन पे और ये बढ़ते रहना चाहिए आने वाली 2 रातों तक। कल कराची खेलेगा, किससे पिंडी का मुकाबला होगा, कौन सी ऑपोजिशन से, ये सब डिसाइड हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर और भी ऐसे माहौल को देखने के लिए लोग आएंगे और भरपूर आएंगे। इतवार को फाइनल, लेकिन उससे पहले अपने हाथ खोलने का, कितने पानी में है, कितने गहराई है और कितनी उठान है, सब कुछ चेक करने का मौका। लेकिन मुश्किल आन पड़ी है रावलपिंडी के लिए। 96 पर 151 रन दरकार है और पार्टनरशिप अब तक स्टेबल नहीं हो पा रही। पहले खिलाड़ी जो कि सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन थे यासिर खान, वो ऑलरेडी वापस जा चुके हैं। नासिर नवाज जो कि इन कंडीशंस में मुख्तलिफ फॉर्मेट में बड़े रन्स बना चुके हैं, वो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस तमाम में दानिश अजीज आ गए गेंद करने के लिए। दानिश अजीज अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है इस पिच पे, रावलपिंडी शायद सोच रहे होंगे उन्होंने ज्यादा रन करवा दिए। ये भी रफ में लगा और ब्रेक हुआ। बस सही है, एक ठीक है। इससे पहले अच्छी बॉलिंग करने का मौका मिला स्पिनर्स को, खासतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और उसके साथ साथ कराची के पास भी ये सहूलियत है। आरिफ याकूब एक अच्छे रिदम में गेंद कर रहे हैं। नौजवान और एक्सपीरियंस बॉलर्स का एक हसीन इम्तिजाज बनी हुई है मेजबान कराची की टीम। दानिश ने आज अच्छा स्कोर किया, फाइनली उनको हाथ खोलने का मौका मिला। आखिरी ओवर्स में उन्होंने 6 भी लॉन्च किए। ये रोक लो। दानिश
जो ऑफ स्टंप के बाहर पैचेस एक बने हुए हैं, दानिश उनको एम कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बैटर के बिल्कुल सामने ये पैचेस बने और पहला बॉल यहीं पे लैंड हुआ था। ये पैचेस तो डेंजर एरिया में है, ये बन कैसे गए, ये ध्यान देना होगा कि क्या ये बैटर्स के डाउन द विकेट जाने से बने हैं या कोई बॉलर विकेट के दरमियान आता रहा है और अंपायर की नजर से बच निकलने में कामयाब हुआ। यस, उसके बाद से रेगुलेशन टर्न है जो कि मिलता रहा, लेकिन हैदर लग रहे हैं जैसे होती है कैट, एक हॉट इन रूफ पे अब तक स्ट्रगल किया है इस टूर्नामेंट में भी और एक मरतबा फिर आज की शाम भी, उनसे बड़ी इनिंग्स की जरूरत। तो फाइनली हाथ खोलने का मौका मिल गया, हाई बैकलिफ्ट के साथ रिलीज किया है शॉट को, फील्ड के दाएं जानिब से चली गई। अच्छे ओवर का अख्तिताम चौके के साथ, रिलीज शॉट था, प्रेशर बिल्ड हो रहा था और हैदर ने इस चीज को रियलाइज किया कि बाउंड्री चाहिए, क्योंकि दानिश के ओवर में 1 रन आया था, लेकिन बाउंड्री के साथ ओवर का अख्तिताम 5 के बाद 25 पर 1। कराची वाइट्स की टीम और लोकल हीरोज़ को देखने के लिए, साथ साथ इन सुपरस्टार्स की खातिर बड़ी तादाद में क्राउड मुतवक्के आने वाले दिनों में, लेकिन उससे पहले फैमिलीज़ को आने का मौका मिला है। शादियों का सीज़न भी है, आप तवक्को करते हैं कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते में बंद भी रहे होंगे, कुछ उनकी तकरीब में जा भी रहे होंगे। अनवर अली गेंद करने के लिए आ रहे हैं, 191 मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, लेकिन बड़े मुख्तसर रन के साथ गेंद करने के लिए आए हैं। आफ्ताब ने भी गेंद करनी है, जो कि मोस्ट लाइकली पावर प्ले के बाद आएंगे। आरिफ याकूब दूसरे एंड से गेंद करने के लिए आ सकते हैं और अचानक से कराची के बॉलिंग ऑप्शंस खुल गए। अनवर अली ने ये नई हिकमत अमली बनाई है इस टूर्नामेंट में, हमने देखा बहुत छोटे रन अप से आते हैं, ज्यादातर चेंज ऑफ पेस करते हैं, एक आधी सरप्राइज डिलीवरी उनकी तेज होती है, ज्यादातर अच्छे हेरियर्स को हिट करते हैं और फिंगर्स रोल करते हैं सीम के ऊपर। जोरदार अपील, बिल्कुल स्टंप्स के सामने मौजूद थे और दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर लिए। नासिर की मुसीबत का खात्मा किया अनवर अली ने अपने ओवर की दूसरी एक गेंद पर, वापस पवेलियन में नासिर। बिल्कुल एक बदसूरत सा स्लॉग था, नो बॉल चेक, यहां पर कोई इशू नहीं अनवर अली के लिए। बिल्कुल मिडिल स्टंप पे जाती हुई ये गेंद नासिर नवाज मिस कर गए और अंपायर के लिए एक आसान फैसला, अनवर अली को कामयाबी। रावलपिंडी की बारी लड़खड़ाते हुए पावर प्ले ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ। नासिर नवाज गए 5 पर 25 पर 2। उमर अमीन और रावलपिंडी की क्रिकेट एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम रहे हैं पिछली एक दहाई के दौरान, चाहे वो मुख्तलिफ नाम के साथ खेलते रहे हों, क्लब क्रिकेट और उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल, हर तरफ उमर अमीन ने अपने होने का सबूत दिया, फिट और अवेलेबल रखा अपने आप को, अपने कूल एंड काम हेड से एक मरतबा फिर लीड करें इनकी टीम को। शादाब ने भी दरमियान में कप्तानी की, अहम होगा रावलपिंडी के लिए अगर वो दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए और आते हैं टीम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उससे पहले उमर अमीन 150 के करीब मैचेस खेल रखे हैं, इस सब में 22 50s रिमार्केबल एवरेज और अच्छा स्ट्राइक रेट भी। मिडिल ओवर्स में इन्होंने हर फॉर्म में साथ साथ वाइट बॉल में अच्छी बॉलिंग के साथ मुकाबला किया है, बैटिंग अच्छी की है, स्ट्राइक रेट को अच्छे अंदाज से रोटेट करते हैं। स्लिप आ गई है, बॉल को टाइम करना मुश्किल हो रहा है इस पिच पर। उमर अमीन जैसे प्लेयर भी जो नॉर्मली ये गिफ्ट रखते हैं टाइमिंग का, पहला गेंद बल्ले के बीच से नहीं टकराया, विकेट
स्लो हो गई है। पहली इनिंग्स में भी इसका एविडेंस था। तो आजम खान की हिटिंग और दानिश अजीज की बैटिंग ने कराची के टोटल को काफी एलिवेट कर दिया था। रावलपिंडी स्ट्रगल करते हुए। तेज रन है, थ्रो अगर आती तो अम्माद की कुछ डिफरेंस बना सकती थी, लेकिन अच्छी और क्विक रनिंग के जरिए से अपना पहला रन हासिल किया। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं हुआ अंपायर को। नासिर नवाज एक बिल्कुल स्लॉग कर गए, बिल्कुल गेंद की लाइन को मिस किया और बल्ला गेंद से मीलों दूर था। अनवर अली ने फाइन लेग ऊपर है, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है ऑन साइड में। अभी भी पावर प्ले है, ऑफ साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है डीप में अनवर अली के लिए, लेकिन लाइन उन्होंने विकेट टू विकेट रखी हुई है। उनके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है ऑफ स्टंप के बाहर। फिर टिपिकल अनवर अली की डिलीवरी, फिंगर्स को रोल किया। एक मौके पे ये सोल्यूशन करार दिए जा रहे थे पाकिस्तान के जो ऑलराउंड खिलाड़ियों में कमी आई थी, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसे शाहकार खिलाड़ियों के बाद, को कि इन्होंने चंद मैचेस में एज अ बॉलर ओवर में ये इनिंग्स की इब्तिदा भी करते रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल्स में, T20s में, साथ साथ इन्होंने एज अ बैटर भी फिनिश किया। कोलंबो में एक शानदार इनिंग्स खेली, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ऑलमोस्ट मैच जिता चुके थे जो लाहौर में इन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद से ये इन एंड आउट रहे हैं इस लेवल की क्रिकेट में। क्विक सिंगल के साथ पावर प्ले का खात्मा होगा, लेकिन बेहतरीन ओवर किया अनवर अली ने। इससे ज्यादा क्या चाहेंगे, 2 रन दिए, विकेट भी कमा ली। रावलपिंडी मुश्किलात में 27 पे 2। अनवर अली की ये हिकमत अमली एज अ बॉलर इस टूर्नामेंट में कामयाब रही है, खासतौर पर जिस तरह की पिचेज हैं। विकेट टू विकेट बॉलिंग का शानदार मुजाहरा। या थोड़े से बदकिस्मत रहे, बॉल अगर उठा लेते तो हैदर को पुश करते, लेकिन बॉल उनके हाथ लगी नहीं। लेकिन कराची की डोमिनेंस है 27 पर 2 पावर प्ले में। ये जहाँ की टीम है रावलपिंडी, वहाँ पे आपने खुद क्रिकेट खेली भी, कवर भी की है, अच्छी तादाद में ग्राउंड्स भी हैं वहाँ पर, KRL का ग्राउंड, फिर पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ओवरऑल वहाँ पे टैलेंट आते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब के प्लेयर्स हमें देखे हैं, नासिर नवाज और यासिर खान अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने रन भी अच्छे बनाए, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा रिलाई करते हैं। ऊंचा खेलने के लिए गए हैं दानिश अजीज के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 2 फील्डर इकट्ठे हो रहे हैं गेंद के नीचे आते हुए, और अच्छा कैच मुकम्मल कर लिया। अम्माद की कॉल थी और गेंद एक बुलंद बुर्ज बनाती हुई नीचे आई, लेकिन नीचे ख़ामज़न हुए अम्माद और महफूज हाथों में पूरे दबादे बाद ने मुंतकिल किया। हैदर भी गए। मुश्किल हो रहा है बॉल को टाइम करने, हैदर स्ट्रगल कर रहे थे। पिछले ओवर में इन्होंने चांस लिया और एक बाउंड्री हासिल की, लेकिन दानिश ने इस मरतबा उन्हें ट्रैप किया। फिर क्रॉस द लाइन, क्रॉस बैटेड शॉट्स। इस विकेट पे ज्यादा परसेंटेज शॉट्स नहीं हैं, लेकिन वही ट्राई किया हैदर ने और अमाद आलम ने अच्छा कैच किया। एक मौके पर लग रहा था दोनों फील्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन की कमी है, लेकिन बर वक्त आवाज लगाई अमाद ने। हैदर की वापसी हुई 6 पर, पिंडी 27 पर 3। गो कि अभी रावलपिंडी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में है शाह फैसल, लेकिन ये नहीं भूलना होगा अगर टॉप 4 में शामिल है, 24 घंटे के अंदर इन्होंने सेमीफाइनल खेलने के लिए आना है, तो कुछ इनका चर्चा कीजिए कि किस अंदाज की आगे कुमक आ रही है। इन खिलाड़ियों के लिए कोई हौसला अफजा व नुमाया किस्म की सहूलियात मिलनी चाहिए जो इनको मोटिवेट करें। अभी तो मेरी जो बातें हैं वो सिर्फ इनको इनकरेज ही कर सकेंगी, क्योंकि सेमीफाइनल इतनी जल्द है। लेकिन जो पिंडी में क्रिकेट की सिचुएशन है, जिस तरह पूरे मुल्क में तकरीबन क्लब क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका दौरानिया कम होता जा रहा है। ज़माने में जब हम खेला करते थे, हम 50 ओवर की क्लब क्रिकेट खेला करते थे। अब 25-30 ओवर, 20 ओवर, T10 की जानिब भी कहीं ना कहीं आपको आवाज़ लगती है कि T10 टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। ओवरऑल क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, यंगस्टर्स की डेवलपमेंट के लिए थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट अच्छे होते हैं। नवाज उसी फॉर्मेट से ग्रूम हुए। ये जब फर्स्ट क्लास में आए तो ये एज ए बैटर आए थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके इनका रोल एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ। 72 इनका बेस्ट स्कोर है और पिंडी इस वक्त बहुत उम्मीद करेगी इस नवाज और उमर अमीन की इस पार्टनरशिप से, लेकिन कहना होगा कि कंडीशंस बहुत टफ हैं और टारगेट बहुत बड़ा है इनके सामने।
रावलपिंडी के 2 सबूत, 2 लेफ्ट हैंडर्स अब इकट्ठे हो गए हैं पिच पे। रन्स मिलेंगे यहां। खुर्रम मंजूर, लेकिन स्लॉपी रनिंग थी यहां पर। ये देखिए क्रॉस बैटेड शॉट्स, मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे। यहां पे अमाद की दाद देनी होगी, उन्होंने नजर बॉल पर पहले रखी, उमैर पर बाद में, इसलिए कैच करने में कामयाब हुए। बेबी फेस से हैं अमाद और उतनी अच्छी सेलिब्रेशन थी। आउट! दानिश अजीज का जादुई ओवर, कप्तान को भी उन्होंने हासिल कर लिया। सॉफ्टेस्ट ऑफ द सॉफ्ट। एक और खिलाड़ी गॉन। ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स था, जिस तरह दानिश बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह विकेट की कंडीशन है, रन मेकिंग बहुत मुश्किल हुई है। ये बॉल भी विकेट में फंसा, ब्रेक भी हुआ, उमर अमीन जल्दी खेल गए और बहुत ही आसान तरीन कैच दानिश अजीज के पास वापस आया। शायद उन्हें खुद भी यकीन ना आया होगा कि इतना आसान कैच कैसे आ सकता। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ, बॉल थोड़ा सा विकेट में ग्रिप हुआ और उमर जल्दी खेल गए। रावलपिंडी की विकेटों की झड़ी लग गई है। यहाँ पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए अब 29 पर। उमर अमीन वापस हुए 1 पर। मुस्तकबिल है ये रावलपिंडी की क्रिकेट का। ऑलरेडी इन्होंने 3 सीजन से धूम मचा रखी है, लेकिन इस सीजन में उस अंदाज की कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। इनके लिए एक यादगार ग्राउंड है जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप बनाई थी अपने अव्वलीन सीजन में, लेकिन अब मुख्तलिफ हालात हैं हैप्पी हंटिंग ग्राउंड में अपने आने के लिए। और ख़ास तौर पर रावलपिंडी के लिए ज़रूरी है कि मुबस्सिर जो कि जवां उम्री में 41 मैचेस का तजर्बा हासिल कर चुके हैं, वो अपनी फॉर्म को बहाल करें और सेमीफाइनल से पहले इस ऑकवर्ड पोजीशन से निकलें अगर फतह ना भी हासिल कर पाएं। ऐसा लगता है ये कराची में नहीं, कोलंबो में मैच हो रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने बिल्कुल बांध के रख दिया है पिंडी के बैटर्स को। इस मरतबा गेंद विद द आर्म अंदर ही आते चली गई। बॉल टर्न हुआ, बैटर्स को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसको टैकल करें। रन्स बनाना तो दूर की बात, सर्वाइवल की भी इस वक्त मुश्किल हुई हुई है। याद रहे कि दोनों टीम्स एक दूसरे के हमकदम है, बम्पर टू बम्पर इनका सफर चला। सुपर 8 की स्टेज में क्वालिफाई दोनों कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले अपने मोमेंटम को हासिल करने की जरूरत है। शानदार ओवर मुकम्मल। दो रन दिए दानिश अजीज ने इस ओवर में। पीस के कोने पर चले गए थे गेंद करने के लिए, पॉसिबली इसको चेक करना चाहते हैं पर बिल्कुल चेक जरूर करना चाहते हैं, लेकिन बॉल यही जो 2 पैचेस आपको सामने नजर आ रहे हैं, इधर ही ज्यादातर बॉल लैंड करा रहे हैं जब दानिश टर्न कराना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे, इस तरह की पिच और इस तरह की कंडीशंस एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हर तरफ स्माइल्स हैं। ये डिसीजन अभी भी पेंडिंग है कि क्या लीगल डिलीवरी थी या वो ज्यादा बाहर निकल गए थे। सब अपनी पोजीशन पे जा चुके हैं। सब कुछ ठीक लगता है इस डिलीवरी के लिए और स्टंपिंग को भी चेक कर रहे हैं, वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रूटीन कंटिन्यू करेगी, स्टेटस को रहेगा कराची में। लेकिन ये पड़ाव शायद रावलपिंडी के लिए कोई आसानी और कराची के लिए इस मौके पर कोई मुश्किल ना लेकर आए। ऑलरेडी उन्होंने शिकंजा कस लिया, 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। पिछला पैर उनका ऑलमोस्ट हर सेकंड में प्लांटेड ही रहा, एक लम्हे को उठा था, लेकिन उसके पहले के आजम बेल्स को डिसलॉज करते वापस आ चुका था। थर्ड अंपायर के लिए कदरे आसान फैसला।
आने को है। जी हाँ, यही मुतवक्को था और यही फैसला आया, लेकिन पिंडी के बैटर्स की मुश्किलात आसान नहीं होंगी। और नवाज इस पिच पे खेलते हुए उन्हें यकीनन याद आएगा अपने क्लब का ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड में खेलते हैं। क्लब क्रिकेट इन्होंने खेली सिद्दीक अकबर क्लब से, वहां पे ऐसी पिच होती है, गज गज ब्रेक होता है जिसे क्रिकेट की स्लैंग में कहते हैं। सब दो सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया रावलपिंडी के लिए क्रीज पे। स्पिनर दोनों तरफ से एक्शन में है और इंटरेस्टिंग असद शफीक गेंद करने के लिए आ गए हैं इस पिच का टर्न देख के। अब तक इन्होंने अपने कामयाब बॉलर लेग स्पिनर आरिफ याकूब को आजमाने का फैसला नहीं किया। अपना आर्म टर्न कर लेते हैं। 7 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। राइट ऑन मनी सो फार। वैसे शफीक को विट नहीं दे रहे। आइडिया हो सकता है कि शायद बचा के रखना चाहते हैं लेग स्पिनर्स को, क्योंकि दोनों टीम्स का आपस में मुकाबला हो सकता है 24 घंटे के अंदर एक मरतबा। फिर जब ये मैच खत्म होगा तो उसके बाद उसके नतीजे की बुनियाद पे ही हम देख सकेंगे कि जो 4 टीम्स पहुंची हैं, एबटाबाद, पेशावर और ये 2, वो कौन किसके खिलाफ मुकाबला करेगा। मार्जिन भी इंपॉर्टेंट है। अगर कराची बहुत बड़े मार्जिन से जीतता है तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और पिंडी चौथे नंबर पर। इसका ये मतलब है कि शायद यही दोनों टीमें दोबारा हमें नजर आई है। हम स्कोर ज़्यादा से कंफर्म करेंगे कुछ देर तक, लेकिन यही रीमैच अगर सेमीफाइनल में हुआ तो पिंडी इस शॉक से क्या निकल पाएगी जो आज उन्हें मिला है कराची के खिलाफ, देखना पड़ेगा। असद शफीक का पहले ओवर सिर्फ 5 रन दिए कराची के कप्तान ने। रावलपिंडी 34 पे 4। दानिश अजीज कंटिन्यू करेंगे अब तक का बेहतरीन स्पेल। पिछले ओवर में तो उन्होंने बांध कर रख दिया और जो पैच डेवलप हुआ है उसे वो गेंद को मुकम्मल तौर पर राइट हैंडर के खिलाफ टर्न कर रहे थे। कदम इस्तेमाल करके आगे आए और गेंद के नीचे आके भरपूर अंदाज से रवाना किया है। ऐसे कई शॉट्स चाहिए रावलपिंडी को दोबारा जागने के लिए। गेंद की लाइन कवर करके बड़ा छक्का सेफ एरिया में। नवाज का पहला। 2 कदम आगे आए थे और भरपूर अंदाज से रवाना किया। दानिश अजीज जिनका पिछला ओवर मैजिकल था, 2 विकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन पहली गेंद पर मैक्सिमम हासिल किया है और जगा देगा रावलपिंडी को ये शॉट। दानिश अजीज अब 2 विकेट लेने के बाद ball starting to turn now. Despite 2 wickets in the previous over, Nawaz deciding to go after him, smashing a 6 of the first ball. Second, there is definite turn in this pitch and it's starting to assist the spinners, and Karachi stronghold of this game they have now. 40 for 4 Rawalpindi, 2 new batters at the crease, and a run rate which is
on the higher side and always increasing. Because at the moment they are just 5 runs and over, a little under that. Well, at the moment it seems like they completely outplayed Rawalpindi in this encounter. 170 is a very competitive score, yes, but the power play, the first 2.52 overs didn't have a boundary. First 4 overs had 2 boundaries only. And that put that pressure. You see that it was just creating that kind of heat underneath, that they have to go for big hits. And probably that resulted in, if not all 4, a couple of wickets. It's taken an edge. We'll go for a boundary. Yes, Asad Shafiq was closing in for the short single, and Nawaz had this big gap over cover in mind, and he went after it. The room was also there, but didn't go over cover. It was edged and went through the short third region for 4. This one has been smashed over mid-wicket. This is a huge 6. So Nawaz is starting to middle some, and he gets 2 6s and a 4 in this over, and 18 Pindi get of this over. They get to 52 after 9. That's a clean strike from Nawaz. Second maximum and a boundary. As you said, 18 in the over, and that's not a good effort. Almost would have taken his chin. Yeah, so we were talking about how the wickets fell because of that pressure in the power play, just 2 boundaries. Let's have a look. It's not that wickets have fallen. It is the way these batters have got out. Look at the strokes that are being played. Look at Haider Ali. There is not an iota of improvement in what kind of approach he brings to the pitch. And sadly, this one again turning a bit, and Umar Amin, soft dismissal. So the first 3 that went absolutely seem to have no connection with any sort of technique while batting. And that is the sad part. You are a specialist opening batter, and you play shots like the ones they were played by the openers, and then Haider Ali playing that one. Hoik from outside off, trying to fetch the ball from outside off. No justification for those kind of shots. Arif Yaqub is the new bowler, who is already the 2nd highest wicket taker in this competition. Nawaz will fancy him because the ball will turn into him, and he's already struck a couple of 6s. We'll see what line Arif Yaqub bowls at Nawaz, because he knows Nawaz likes to hit over mid-on, over mid-wicket. Ready run, Asad bhai. Umar, ready run. Swept away just for 1. Yeah, Arif has been an integral part in those mid-overs, usually comes into operation around the 10th or 11th. 18 wickets for him in the tournament, 2nd highest after Mohammad Imran from Peshawar. He had a 6 wicket in 1 match, so he's taken over. But how important are his 4 overs in any sort of chase or bowling first? He just applies those breaks, and if he's bowling in those middle overs and getting that many wickets, that means he is disturbing the oppositions. He hasn't got hold of it. Straight away, there you go, 19 to Arif Yaqub. And even if he wasn't the highest wicket taker, I think he will be after today, because the way he's bowling, the amount of spin that there is in the pitch, he's likely to get wickets. And especially when batters are opting to play shots like these. Mubassir Khan plays another very ordinary stroke and only succeeds in giving the 3rd a simple catch. Look at the flight on the ball, beating the eye line twice, and an easy take for Anwar Ali. Mubassir goes for 4. It's 54 and half the side back in the dugout.
Umair Masood, the new man in, the wicketkeeper batter. And he's played a couple of decent knocks this season. I saw him in one of the List A games, getting his side to victory when they had lost early wickets. And now is a very tough task at hand for him to join hands with Nawaz and take his side over the line. Will be nothing short of being miraculous. But firstly, he has to contend with the challenge of Arif Yaqub. And straight away there's a wrong one, which he is very lucky to survive. He had no idea which way the ball was going. And Arif Yaqub, who is the joint highest wicket taker now, look at the wrong one. No idea. Very lucky to survive this one. Hey, good, he got that back leg out of the way. Could have brushed that bad flap. Boundary. Swings and swings hard and gets 4 runs to his name to start off. Poor captaincy that once again. Asad Shafiq is so experienced. He knows that the bowler is flighting the ball. So the ball will go towards the cover, the extra cover region, and he had his fielder towards deep point. And this is something the captain needs to be aware about. Now he's positioned at the right position. Turnover's gone 58 for 5. Let's have a look at that wicket, the last one. Anwar takes the catch, making it 19 wickets to Arif Yaqub in the tournament. Will be very interesting the way Mubassir Khan has played. Why I want to show you the way he got out is this boy has been the part of the Pakistan Shaheens for a number of tours now. So what sort of a batting growth has come along his way during all that time that he has spent on tours, we'll just see the way he was dismissed. So Mubassir Khan, when he was trying to hit that ball over cover or mid-off, look at where his front leg goes. Just have a look. It goes towards long on, and he's trying to hit the ball over long off or covers. And that is going away from the ball. And it is a flighted delivery. So you need to be in a proper position to hit it over extra cover. It's not the way batters go after good bowlers. Well, since the ball is turning and there's grip, Asad Shafiq is into his second over. He'll probably fancy a wicket or two to his name. Just waiting for that side screen to flip, rotate and make it all black. That list that you shared with us just now has 2 bowlers from Peshawar, Imran on top, number 3 Iftikhar, and 2 for Karachi, Suhail Khan at 2, and joint highest is Arif Yaqub. They're enjoying it. Home side is doing well at the Tapal Tea Lounge, sipping a nice cup of hot tea, and hopefully a win for their home side. So joint highest Imran and Arif, and number 2 is Suhail Khan. 3 is Iftikhar, and then so on. Nisar has done well. Well, that's a brave shot. Side in trouble, get a boundary. He's played that reverse from in front of the stumps. I think Asad Shafiq wouldn't mind that. That would create an opportunity if that's how Pindi has decided to bat. Well, for now, Pindi don't have a choice, do they? Because they require 12 runs in an over. The ball is turning. So the batters will try things like these. But it's just the top 5 who have been really disappointing the way they have lost their wickets.
not much of a time. If Karachi wins this, tomorrow will be the semi-final between the same sides. What all can they do overnight to correct themselves, Rawalpindi? Well, if that happens, I think both of the sides will be happy. At least they won't be playing Peshawar in the semi-final. Tomorrow, the two semi-finals hopefully, probably, will be played on pitch number 6, if I'm not wrong. But that's the one which is covered with the mat on the square. We'll show that to you. That's the one. Only one, Manju. 11 gone, 65 for 5. Six, 7 have played well in terms of batting we've seen, which is 2 hours left. And then they have the center pitches, the green ones. And then to the right have shown more grip and turn. Today is a little more exaggerated. But we've been using 3 on the left side, 3 pitches on the right side through the tournament. Nine overs to go from here, and it's 106 required of 54. You see it at the bottom of your screen. Arif Yaqub with the wicket in the first over. Look to take the top and not be joint highest. That is well fielded. I think it's Ahmad Alam there at long on. Made quick ground and a good throw, keeping that to 1 only. Arif Yaqub, he has a chance of picking up wickets because the batters, they need to go after the bowlers, and there's a spin in the pitch. Spinners have enjoyed themselves, especially with no dew in the evenings, able to grip the ball. And as we've discussed earlier, sides winning the toss are now just keeping their eyes shut and saying we'll bat first for sure. Karachi in the last 2 outings we've seen here seems to be peaking at the right time. They seem to be getting that rhythm. He's been struggling with the bat, got runs today. He's been amazing with the ball. Danish Aziz, of course, Arif Yaqub being joint top wicket taker. Azam is getting that big hits going, and then the openers. The idea was right there from Nawaz. It was the wrong one, so he wanted to go over cover, but he missed it completely. Like the look of Arif Yaqub, is not afraid to flight the ball, asking the batter to go after him if he can. And this is definitely a different challenge because not many spinners these days flight the ball and ask the batters to use their feet if they dare to. Wow, have a look at that. The wrong on goes through the gate. Had no idea whatsoever, Umair. That's a classic wrong on. Why not? A top wicket taker in the tournament can bowl a ball like this. He sure is a battle-hardened cricketer who has come up late, but he has come up fully prepared in this tournament. This is his first appearance at this level, and look at this delivery. Wonderfully flighted, and the batter in 2 minds. No idea where the ball is going to go after pitching. And look at his eyes. He knew what's going on. And the umpire, who has himself taken 500 first-class wickets, he was very impressed if you saw that picture. Mohammad Asif, the off-spinner for Zarai Taraqqiyati Bank, and he's mighty impressed with Arif Yaqub, and why not? He is, after all, the highest wicket taker of the tournament.
Just that last ball, Stint, I'm just wondering, Rawalpindi, yeah, they lose this game, they're not out of the semis, but what kind of dent will they have? And to recover from this kind of a loss, if they do, it seems the case, it will take some mental strength to come back and face the same side in a knockout. Arif Yaqub, 2 for 9 in 1.5. He's got 20 wickets, highest wicket taker now. Single to the total, 69 for 6 after 12. अगर इस टूर्नामेंट का कोई पोस्टर बॉय आप बनाना चाहते हैं तो वो इससे पहले आपकी स्क्रीन पे मौजूद थे, ये भी बन सकते हैं आने वाले दिनों में। आरिफ याकूब टॉप विकेट टेकर और दोनों हाथों से ग्रैब किया इस अपॉर्चुनिटी को, जबकि कराची वाइट्स उनसे आगे थे रन्स में भी और इसके साथ साथ उनकी सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी। रावलपिंडी का सफ़र जो कि उस शारा पे चढ़ ही नहीं सका शुरू से, जिसके लिए उनको आस्किंग रेट पे जाना था, 9 रन्स पर ओवर की औसत के साथ अब 13 तक पहुंच रहे हैं। आरिफ याकूब स्पिन डॉक्टर कराची के, खूबसूरत रॉन्ग वन जिसको पिक करने में कामयाब ना हो सके नौजवान उमैर, और वहीं पे वो समझ चुके थे कि उनके इस जवां उम्री में इस मैच में सफर का खात्मा हो चुका है। कोई सिंगल है, अगर थ्रो लगेगी तो शायद अपस्टेयर जरूर जाते, लेकिन पहुंच पाए अपने क्रीज पे। आरिफ याकूब की अगर बात करें तो अगर उनको फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट कहूँ मैं तो शायद गलत नहीं होगा। ये पिछली बॉल पे बड़ा तेज सिंगल और डायरेक्ट हिट से कुछ भी हो सकता था और बहुत क्लोज, लेकिन आरिफ याकूब की बात हो रही है तो बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत मुतासिर किया उन्होंने अपनी फ्लाइट से, अपनी स्पिन से, अपने बड़े दिल से और अटैकिंग मोड से जो उनके पास मौजूद है, जो लेग स्पिनर का होना चाहिए। हमेशा विकेट की तलाश में रहते हैं। निकल जाएगी गैप के लिए, 2 खिलाड़ियों को घुमाती फिराती और गिराती हुई गेंद चौके के लिए चली गई, स्लिप कर गए। कोई अब तक इसके अलावा तो हिंट नहीं मिला ड्यू का और शायद अपनी गलती से स्लिप हुए। अम्माद आलम अमूमन बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से मिस टाइम कर गए डाइव, क्योंकि उनके सामने वाले खिलाड़ी ने डाइव की और ये देखिए लेट हुए डाइव पे, और फिर अच्छे फील्डर से ये तवक्को नहीं की जाती। अब तक जो टॉप टीम्स हम फ्लाइट हासिल करते हुए देख रहे हैं, हर चंद के उसमें इफ्तिखार भी हैं जो पेशावर के या इसके अलावा फ़खर ज़मान एबटाबाद के, लेकिन वो नौजवान खिलाड़ियों ही के बरहूने मिन्नत यहाँ पे पहुँची हैं। कराची उसकी एक जीती जागती मिसाल है, जहाँ पर अम्माद आलम या अम्माद ने और उसके साथ साथ उमैर बिन यूसुफ और अब आज़म जो कि इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को एक एग्रेसिव क्रिकेटर के तौर पे, उन सब ने परफॉर्म किया। और उसके साथ साथ अब बॉलिंग में जो कि आपको शायद एक तिश्नगी लग रही थी कि उस टूर्नामेंट में आपको वो नहीं मिल सके हैं गेंद करने वाले, वो भी आपको कमी पूरी होती दिखाई दे रही है। तो जो चीज़ें आपको असल हैयत में जाते हुए मिलनी चाहिए, बिजनेस एंड में जाके या सेमीफाइनल तक पहुंचते हुए, कराची उसकी एक बेहतरीन मिसाल बनी है। पेशावर तो टेबल के टॉप पे है ही, जिसकी टॉप फ्लाइट का सिलसिला जारी है। वो तो शायद टूर्नामेंट के इब्तिदा से उनको अपने एक एक नगीने का पता था कि वो कहाँ पे फिट बैठता है, लेकिन कराची के लिए भी क्वेश्चन अब अच्छी बनती जा रही है और एक एस्टैब्लिश टीम के तौर पे वो सेमीफाइनल में एंटर होगी। इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम किसका मुकाबला करती है और इस मैच के नतीजे डिपेंड करेगा। हो सकता है ये टीम्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले में हैमर। जी हाँ बिल्कुल, मुकम्मल वसूख से तो अभी मैं नहीं कह सकता, अभी कैलकुलेशंस इसकी होंगी है, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि अगर कराची आज ये मैच जीत जाती है तो सेमीफाइनल में भी शायद इन दोनों का ही आमना सामना हो।
स्लैप किया और सीधा फील्ड की जानिब खेल बैठे हैं। गेंद उनसे दूर जा रही थी, जिसको बजाय इसके कि वो ड्रैग करके ऑन पर लाते, अब प्रॉपर बड़े शॉट के लिए जाते हैं सर्कल के ऊपर। वादे तीतर आधे बटे शॉट के लिए चले गए और सामने असद शफीक मौजूद थे कैच करने की खातिर। नो बॉल का कोई चांस नहीं, फेयर डिलीवरी है ये और थोड़ा सा पीछे किया था, समझ नहीं आई क्या शॉट खेलना चाहते थे, ना पुल मारने की पोजीशन में थे, उसको स्लैप करना चाह रहे थे किसी तरह, लेकिन सीधी कवर के हाथ में उन्होंने दे दी और एक और विकेट का नुकसान। बिलावल भट्टी 3 रन बनाने के बाद आउट हुए 77 पे 7 13 ओवर के इख्तिताम पर। जहांदार जो कि 1 घंटा पहले अगर आप इनसे मुलाकात करते तो हालांकि इनके अंदाज अतवार थे, लेकिन अब रावलपिंडी की टीम के लिए उनको सिर्फ शायद अपने वक्त को गुजारना हो और जाते जाते मार्जिन को कम कर सकें। गो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन एक ऑकवर्ड तरीके से वो अपनी रसाई हासिल करेंगे इस नॉकआउट मरहले तक। दूसरी जानिब कराची की वो शानदार लेगेसी रखने वाली टीम जिसके सुहेल अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, खुर्रम मंसूर अब भी इनिंग्स की इब्तिदा करते हैं, लेकिन वो जो लेगेसी एक ज़माने में शाहिद आफरीदी, खालिद लतीफ़ जैसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की हुआ करती थी, उसको आगे ले जाने के लिए इस टीम में अम्माद हैं, उमर बिन यूसुफ हैं जिन्होंने दिल खोल कर परफॉर्म किया। आज़म का बल्ला रन जुगर है और ये एक इंटरेस्टिंग कॉल है यहाँ पर ऑल आउट करने के लिए लेग स्पिनर आरिफ याकूब जो कि 2 ओवर में 10 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके थे, उनको भी आजमा सकते थे, लेकिन जा रहे हैं लगता है कि किल के लिए, और उसके लिए वापस आए हैं सोहेल खान यूनिवर्सिटी रोड एंड से। पिंडी की ये मायूस कुन परफॉर्मेंस है आज और इसको 2 जावियों से देखा जा सकता है। अमूमन टीम्स जो है वो चाहती हैं कि एक मोमेंटम के साथ नॉकआउट स्टेज में जाएं। ये आखिरी बिलावल भट्टी आउट होने वाले बैट्समैन बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन थे, नो शॉट एट ऑल इसको आप कहें। और दूसरा जाविया इसका ये है कि अगर कोई टीम कोई मैच हार ही रही है तो वो बेहतर है कि वो नॉकआउट स्टेज से पहले हार जाए, ताकि तमाम जो गलतियां इन्होंने इस मैच में की हैं वो उसको जो है वो अवॉइड कर सके नॉकआउट स्टेज में। लेकिन एक है इनका टॉप ऑर्डर अहमर, और वो लगता है ये कि यासिर खान और नासिर नवाज पर ही मुश्तमिल रहेगा, और उसके बाद हैदर अली बैटिंग के लिए आते हैं। ये तीनों राइट हैंडर हैं और एक ही तरह के ये प्लेयर समझे जाते हैं जो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करते हैं। खासतौर पर यासिर खान जिन्होंने गो के टेबल में टॉप पे रहने के लिए स्कोर भी अच्छा किया है, और वो बन्नू से आते हैं याद रहे कि रावलपिंडी की टीम को ज्वाइन करने के लिए, और एक इंटरेस्टिंग इंक्लूजन थी उनकी। लेकिन इसके बावजूद आपको इन 3 एक जैसे प्लेयर्स में आज जो हुआ ये कि अच्छी बॉलिंग के सामने ये पकड़े गए, और ये शायद कल भी हो या फिर अगर इनको आगे जाने का मौका मिलता है, और इस चीज़ में चेंज करने को इस वक्त कोई अलग प्लेयर दस्तयाब नहीं है, इन्हीं में से कुछ बेहतरी लानी पड़ेगी। ऊंचा खेलने के लिए गए नवाज, कासी देर तक हवा में रही और फाइनली एक मरतबा फिर अम्माद के हाथों में चली गई। यहां भी अम्माद, वहां भी अम्माद, कैचिंग भी अच्छी, ग्राउंड फील्डिंग भी, और एक और नुकसान रावलपिंडी सीने खिलाड़ी नवाज गए। राहिल मजीद डगआउट में इस्लामाबाद के कोचेस में से एक बिल्कुल खुश नहीं लग रहे, और नो बॉल चेक, ठीक है ये बॉल, और एक बार फिर पीछे गिरा हुआ बॉल पुल करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं कर सके, बल्ले के ऊपर के हिस्से पे कहीं लगी, और अम्माद आलम के लिए बहुत ही आसान कैच। नवाज ने अपनी सी कोशिश भरपूर की लेकिन 32 रन बनाकर वो भी गए। 79 पे 8 रावलपिंडी।
जो हम तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, अब देखना यह है कि इनके पास क्या को मौका पाती है आने वाले मैचेस के लिए, जो क्लियरली सेमीफाइनल और पोटेंशियली फाइनल तक अगर क्वालिफाई करते हैं। मेहरान मुमताज़ जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन का बॉलिंग का जादू जगा के जा चुके हैं, इब्तिदा में अपने जवां उम्री में बैटिंग भी काम की कर लेते थे। पेस पर अलाई करने की कोशिश सुहेल की, और जो वो एक डायमेंशन के प्लेयर पहले वहां आते हैं और उसके बाद उमर अमीन और नवाज भी लगभग एक ही तरह के प्लेयर्स हैं जो कि फॉलो करते हैं अपने 3 टॉप ऑर्डर के बैटर्स को। नवाज जो कि स्ट्रगल कर रहे थे ऊंचा खेलने के लिए, अपनी जगह पे खड़े खड़े लॉन्च किया। वो जो पावर चाहिए होती है पूरी वाइल्ड स्विंग की, वो उनके इस फुल स्विंग में ना आ सकी, और अच्छा रनिंग कैच लिया माद आलम ने गो के इसको आसान बनाया भागते हुए। अब देखना है कि रावलपिंडी के लिए अगर शादाब मौसर आ जाते हैं तो एक एंगल को जो ऑलराउंडर की आमद के साथ फिलअप हो जाता है वो तो उनको सहूलत देगा, लेकिन इसके साथ साथ इनके बॉलर्स को अपने आप को जी अप करना पड़ेगा। बिलावल भट्टी आ गए टीम में, इब्तिदाई 2 ओवर्स अच्छे किए थे। लंबा चेज है दोनों फील्डर्स के लिए, लेकिन दोनों के दरमियान से निकल जाएगी। मेहरान को अपना पहला चौका लगाने का मौका मिला। टांग की तरफ ये बॉल चला गया स्विंग होके थोड़ा सा, और भरपूर फायदा उठाया इसका मेहरान ने। हल्का सा बैट ही लगाने की जरूरत थी, बहुत बड़ा गैप मौजूद था वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, और 4 रन हासिल किए। और जमान की अदम मौजूदगी में जिनको बॉलिंग में कमी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जमान की खासियत ये है कि वो नई और पुरानी गेंद दोनों के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इम्प्रोवाइज करने की कोशिश है, स्टंप्स के सामने पकड़े गए। सुहेल ने उनको चौके के रिवेंज के तौर पर भी हासिल कर लिया और नवा नुकसान भी इन्फ्लिक्ट कर दिया। एंड मिडल स्टंप के सामने प्लम मौजूद थे और बड़ी कोशिश की सुहेल के पेस के सामने, मेहरान भी गए। ठीक है जी, फेयर डिलीवरी। और ये आप अगर ये शॉट देखें तो मैं हैरान होता हूँ इन यंगस्टर्स को कभी कभी देख के, लैक ऑफ कमिटमेंट शो करता है। या आप टीम की हालत देखिए, 8 खिलाड़ी 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 84 रन पे, काफ़ी ओवर अभी बाकी हैं। कुछ ना कुछ इस मैच में डीप जाने के लिए कुछ ना कुछ। मेहरान मुमताज़ 4 रन बना के आउट हुए, और कुछ ना कुछ कोशिश, मेहनत, किसी तरह की कमिटमेंट नज़र आनी चाहिए, जो कि अफसोस की बात है कि नहीं आती नज़र। आप हमें तो बड़ी चाय पिलाते हैं अहमद यहाँ, लेकिन क्राउड के लिए भी इस तमाम तरोताज़ा होने का तमाम मौजूद है। टपाल टी का ये लाउंज जो कि खुशगवार यादें दे के जाता है इन सबको, एक यादगार लम्हा जिंदगी का, जबकि 3 विकेट्स हासिल कर ली हैं सुहेल ने भी। नौजवान अवेस आए हैं आखिरी नंबर पे बैटिंग के लिए। एक और कामयाब ओवर मुकम्मल कराची और सुहेल का, 2 विकेट्स हासिल की 84 पे 9। और इनके विकेट पे आने की ये वजह है, एक इनोवेटिव शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, किसी पोजीशन में नहीं थे ये शॉट खेलने की, और सीधा बॉल। विकेटों के अलावा और कहीं नहीं जा सकता था ये अगर पैड बीच में ना आता तो। आरिफ याकूब आ गए मुख्तलिफ एंड से अपना तीसरा ओवर करने के लिए, जो कि मुमकिन तौर पर इनिंग्स का आखिरी ओवर भी हो सकता है। टॉप विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के, फ्लाइट के साथ गेंद दी, ऊंचा खेलने के लिए चले गए, आउट होने का मौका और आसान कैच मुकम्मल कर लिया। अम्बाद के हाथों से गेंद आज कहीं नहीं जा रही, बड़ी फजा हासिल की है कराची ने। आरिफ याकूब के चेहरे पे इत्मीनान, टॉप विकेट टेकर टूर्नामेंट के, और रावलपिंडी को मैसिव कमबैक करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर नेशनल T20 के सेमीफाइनल में। मगर ये शाम है आज कराची की, 86 रन से जीते। बहुत ही आसान विकेट
आरिफ याकूब के लिए फ्लाइट की रेगुलेशन, लेग स्पिनर की फ्लाइट और एक टेल एंडर का भी रेगुलेशन शॉट। आसान कैच मिड विकेट की तरफ। हर तरफ की सुपरमेसी मौजूद रही आज कराची की अपने होम ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम में, जहां पर उनके तमाम शोबों ने परफॉर्म किया। एक आधा लैप्स आपको आउटफील्ड में नजर आया, लेकिन इसके अलावा अपने इब्तिदाई नुकसान के बाद उन्होंने रिकवर किया और फिर बॉलिंग में तो उन्होंने हिलने का मौका नहीं दिया रावलपिंडी को। इब्तिदा के ओवर्स में जो दबाव बढ़ता गया इस शानदार बॉलिंग की सूरत में, उसके बाद वो विकेट्स की सूरत में लाते गए और अभी आलम हुआ कि 15वें ओवर की पहली गेंद पर उनको आउट करने में कामयाब रहा। जो इन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की खुशी है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो नौजवान खिलाड़ी परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं, अम्माद, उमैर बिन यूसुफ, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मौका मिला आरिफ याकूब को इस इंटरनेशनल स्टेज पर, इस मानी खेज लम्हे पे जब उन्होंने टेबल के टॉप पे जगह बना लिया विकेट टेकर्स में, वो मोमेंट ही अलग होगा। और उनके चेहरे में जो कॉन्फिडेंस है वो तो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ जो एक जज्बात का दरिया मौजन होगा उनके दिमाग में, उसका आप इस वक्त तस्वर नहीं कर सकते। सो वेल डन टू कराची, बट आने वाले मैच में कमबैक का मौका मिलेगा और करना भी पड़ेगा। नॉकआउट मरहले में कोई दूसरी सोच नहीं होती। आज के दिन वो अपने आप को दोबारा से इकट्ठा कर सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड में कुछ देर के लिए डीप ब्रीफ में जा सकते हैं, होटल पे जाके रिलैक्स करेंगे और फौरन से एक बड़ा कमबैक करना पड़ेगा फिजिकली, मेंटली और प्रोफेशनली रावलपिंडी को। लेकिन उससे पहले कराची को मुबारकबाद, बड़ी फतह के साथ उसने टेबल पे एक मीनिंगफुल फतह हासिल कर लिया, जिसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये शानदार फतह हासिल की स्कोर कार्ड के साथ। रावलपिंडी की कहानी बैटिंग की काफ़ी मायूस कुन कहानी। टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल क्लिक नहीं किया और 10, 5, 6 कोई डबल फिगर्स में नहीं जा रहा था। नवाज 32 के साथ और उमैर 10 रन के साथ वाहिद दो खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर्स में जा सके, और वक्फे वक्फे से रेगुलर इंटरवल से विकेट्स गिरती रही और बिलाखिर 84 रन पे 14.1 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। सुहेल खान ने बॉलिंग की इब्तिदा की थी कराची के लिए, जिन्होंने 3 विकेट्स इन दी एंड हासिल की। अपने आखिरी ओवर में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दानिश अजीज भी आज अनप्लेएबल लग रहे थे, जिन्होंने अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के जरिए से 2 को वापस भेजा। अनवर अली ने भी 2 और आरिफ याकूब लेट आए बॉलिंग करने के लिए 6ठे नंबर पे, लेकिन महज 13 गेंदों के अंदर उन्होंने 10 रन देकर 3 खिलाड़ियों को एक मरतबा फिर चुरा लिया। आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे यासिर खान, जिन पर रिलाई कर रही थी रावलपिंडी की टीम। ऊंचा खेलने के लिए गए थे अक्रॉस द लाइन, लेकिन उनको स्टंप्स के एंड सामने पकड़ लिया सुहेल ने और फिर आए थे अनवर अली गेंद करने के लिए, जहां पर एक कदम आगे आकर खेलना चाहते थे नासिर नवाज, लेकिन वो भी वापस गए और फिर दानिश अजीज का तूती बोला और उसने शिकंजा कस दिया रावलपिंडी के खिलाफ। ऊंचा खेलने के लिए गए थे, दरमियान में लाउड कॉल थी अमाद की और उसके बाद खूबसूरत सेलिब्रेशन भी। दानिश अजीज को एक सॉफ्टेस्ट डिसमिसल के साथ वापस भेजने का मौका मिला। उमर अमीन को उस वक्त तक झड़ी लग चुकी थी रावलपिंडी की विकेट्स की, जैसे वहाँ बारिश के कतरे गिरते हैं उस अंदाज से विकेट्स गिरती रहीं। गेंद करने के लिए आए थे आरिफ याकूब, जिनकी रॉन्ग वन को पिक करने में कामयाब ना हो सके और फिर ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम था कि इनके तमाम विकेट्स गिरती हैं। असद शफीक का एक महफूज कैच, नवाज जो कि एक अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड पे विकेट्स भी गिरी और ये भी लंबा ना खेल पाए। उसके बाद एंड स्टंप्स के सामने मौजूद पाए मेहरान मुमताज और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी अवैस अनवर, जो कि ऊंचा खेलने के लिए चले गए थे। लेकिन अमाद आलम, जहां भी आपको गेंद जाती दिख रही है, नीचे हंसते मुस्कुराते और महफूज हाथों वाले अमाद आलम उभर के सामने आ जाते हैं। ये आज की कहानी। कराची वाइट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। उमैर बिन यूसुफ 46 रन, दानिश 43 और आजम की एक कैमियो समझ लें 19 बॉलों पे 34 रन। जहादात 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए और नवाज और बिलावल ने एक विकेट ली। रावलपिंडी उसके जवाब में 14.1 ओवर में 84 रन पे आउट हो गई। नवाज वाहिद बैट्समैन था जो 32 रन बना के कुछ खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। आरिफ और सुहेल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। अनवर अली 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। कराची वाइट्स ने ये मैच 86 रन से बआसानी जीत लिया। और अब ये वक्त आ चुका है कि उगदा खुले कि किसका किससे मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले इस बॉक्स को खेलते हैं और उसको देखते हैं कि कौन कहां पे स्टैंड करता है पॉइंट्स टेबल की सूरत में। सुपर 8 की स्टेज है ख़वातीन और हज़रात, जिसमें पेशावर ने डोमिनेट किया, अपने 7 में से 7 मैचेस को जीत गया। कराची वाइट्स दूसरे नंबर पे आया आज की इस बड़ी फतह के साथ
2 मैचेस में उसको शिकस्त हुई, लेकिन इसके अलावा इसने ऑल आउट कारकर्दगी दिखाई। एबटाबाद ने भी आज एक और फतह हासिल की, तीसरे नंबर पर उसने फिनिश किया है। और रावलपिंडी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन आज की शिकस्त के साथ वो चौथे नंबर पे मुंजमद रह गया। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मैच की प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ फिर मौजूद होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। Welcome to the post-match presentation of the last game of the Super 8, and it's been wrapped up in style by Karachi Whites, winning this game handsomely and coming up in the points table at number 2 position, which means now we have the semi-finalists tomorrow. First game, Peshawar versus Abbottabad, and the second one under lights. It will be the same sides, Karachi Whites taking on Rawalpindi region. Now, before we give away the awards, the guests have to be introduced, and to my left, starting with Mr. Mohammad Ehsan Malik, the security in charge of the National Bank Cricket Stadium, and Mr. Ramzan Ali, Managing Director, AH Group. Welcome, gentlemen. I'll request Mr. Ramzan Ali to please present the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of 25,000 to Arif Yaqub for his brilliant numbers, 2.1 overs, 10 runs, 3 wickets, highest wicket taker in the tournament with 21 wickets to his name. 21 विकेटें इस टूर्नामेंट में हासिल की हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए, and there's more opportunity in the semi-finals for him. Next up, I'll request Mr. Mohammad Ehsan Malik to please present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000. Once again, it's Danish Aziz, 43 runs of 26 balls with the bat, and then 2 wickets with the ball. All-round performance from him. 43 run, 26 गेंदों पे, 2 चौके, 3 छक्के, और साथ में 2 wickets भी. We'll talk to Danish.
दानिश, एक अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल सेमीफाइनल के टर्न पे आते हुए दो शानदार परफॉर्मेंसेस रही मैन ऑफ द मैच की, तो नाउ यू फाइंडिंग योरसेल्फ इन गुड रिदम और रेडी हैं सेमीज के लिए। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल ऐसी है, बड़े मैच से पहले एक दो ऐसी परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं कि जो आपको बूस्ट करें, और कल सेमीफाइनल है तो इंशाल्लाह ये चीज़ें काम आएंगी। कैसा खेला पिच बाहर, क्योंकि आप एक ऐसी कंडीशन में गए थे जब टीम को चाहिए था स्कोर 10-11 के ओवर 90 का ही स्कोर था टीम का, क्या प्लानिंग थी आजम के साथ? मेन तो यही था कि 160 170 जैसे हमने प्लान किया था, और फिर बीच में बॉल ग्रिप भी हो रहा था, लेकिन एंड में फास्ट बॉलर्स पे अच्छी हिट्स लगी। आजम साथ होता है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। क्या टेक्निक रखी, क्योंकि हमने देखा बैटर्स ने स्ट्रगल किया है, ग्रिप और टर्न की आपने बात की हो रही थी, तो किस तरह से इम्प्रोवाइज किया अपनी बैटिंग को? आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर रखा था बॉलर पे, तो उस वजह से वो लोग तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, उसका एडवांटेज हुआ हमें और अच्छी हिट्स लगी। चलिए, वेरी वेल डन एंड गुड लक फॉर द सेमीफाइनल। थैंक यू। Danish Aziz, the player of the match, the Jazz player of the match. Now I'll request Umar Amin, the captain of Rawalpindi, to please come and have a word with us. Umar, इतना अच्छा नहीं रहा ये आउटिंग, और टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। एज कप्तान क्या आप सोच रहे हैं, बिकॉज यू ओनली हैव 24 आवर्स और इसी साइड को फिर खेलना है सेमीज में? बिल्कुल, टर्न अराउंड के लिए टाइम तो बहुत कम है, लेकिन अगेन एज ए टीम हम लोगों को अपने आप को लिफ्ट करना होगा। जो गलतियां की हैं वो रिपीट नहीं करनी। ओवरऑल चेज में खास तौर पे रावलपिंडी काफी अच्छा रहा है थ्रू द टूर्नामेंट। इनफैक्ट सबसे ज्यादा चेज आप ही लोगों ने किए हैं। आज इतना डिफरेंट क्या वजह दिखती है आपको? आई थिंक उनके बॉलर्स को क्रेडिट के उन लोगों ने पिच को हमसे बेहतर असेस किया। उन लोगों ने, स्पिनर्स ने स्पेशली आके बॉल को थोड़ा फ्लाइट से किया और पेस को वेरी किया, थोड़ा स्लो बॉल किया, जिसकी वजह से उनको पिच से ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। बॉलिंग में आप लोगों ने इनको रोक के रखा हुआ था, तकरीबन 90 कुछ थे 10-11 ओवर्स में इनके। यू फील के कुछ ज़्यादा रन्स दे दिए आखिरी 9 में? यस, आई थिंक जिस तरह मैंने टॉस पे बोला था कि 150 तक हमारा टारगेट था, 170 आई थिंक कुछ फील्डिंग में लैप्सेस हुए और कुछ बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई एंड पे। चलिए, होप यू कैन erase this and come back tomorrow as a fresh unit and play the semi-final. Thank you very much. Thank you, Omar Amin, the captain of Rawalpindi. Now I'll request the winning captain, Asad Shafiq, from Karachi Whites, to come and have a word. Asad, totally clinical performance, और खास तौर पे एक नॉकआउट से पहले सेटिस्फाइड है, और किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोग्रेस को सेमी में जाते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह की परफॉर्मेंस आज हमने दी है ये रिक्वायर्ड थी, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा नॉकआउट है। जब मैच शुरू हुआ था तो हमारा यही टारगेट था पहले बैटिंग करके कि अराउंड 170 अगर हम कर जाते हैं तो हमारी बॉलिंग इतनी केपेबल है कि उसको डिफेंड कर सके। तो क्रेडिट जाता है हमारे बैट्समैनों को, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया और हमें जो हमारे माइंड में टारगेट था वो अचीव करके दिया। और फिर बॉलिंग साइड हमने जिस तरह से बॉलिंग की, स्पेशली हमारे स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर ने पिच को बड़ा अच्छा एसेस किया, पेस को अच्छा वेरी किया और यूज़ बहुत अच्छा किया पिच का। कराची ने अच्छे टाइम पे पीक करना शुरू किया है टूर्नामेंट में। आप एज कप्तान किस तरह से रखते हैं सिस्टम को ड्रेसिंग रूम में? ज़्यादा बात नहीं या ज़्यादा बात रखनी है, किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं लड़कों को? देखें, हम टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है और हमें लग रहा है कि इन चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह बैट्समैन से हमने बात की थी कि हम डॉट बॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, हम बाउंड्रीज तो मार रहे थे लेकिन हम सिंगल उस तरह नहीं ले रहे थे, तो उस चीज़ को बैट्समैन ने सबने रियलाइज़ किया कि इस पर काम करना चाहिए। तो यही काम करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें ऐसी दिखती है कि उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बात करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एज कप्तान आरिफ को कैसा देख रहे हैं? फर्स्ट आउटिंग है उनकी इस लेवल पे और 21 विकेटें, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए टूर्नामेंट के। हाँ जी, आई मीन कि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, लग नहीं रहा है कि वो पहला अपना सीज़न खेल रहा है। फ्रॉम द फर्स्ट मैच वो हमारी चॉइस थी। हमने देखा हुआ तो था ऐसे, क्योंकि कराची में काफ़ी क्रिकेट खेल चुका था ये, और जिस तरह से इसने नेट पे बॉलिंग शुरू की थी तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट जो है वो कराची के लिए साबित होगा। और जिस तरह वो अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, आई थिंक कि वो आगे जाके जो है वो कराची के लिए और फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अगर वो होता है सेलेक्ट तो इसी तरह की परफॉर्मेंस करेगा। चलिए, वेल प्लेड टुडे, मोमेंटम आपकी साइड पे है, कल शाम को फिर मुलाकात होगी इसी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Asad Shafiq, captain of Karachi Whites, winning this match, and now once again letting you know, पहला मैच कल, पहला सेमीफाइनल Peshawar versus Abbottabad, and then later in the evening ये दोनों टीमें यानी Rawalpindi and home team Karachi Whites will be playing the second semi-final, and that concludes the presentation.
had a pretty one-sided game tonight, the last game of the league stage. Karachi were very dominant with the bat and with the ball as well. Rawalpindi struggled to get to that 170 that was set to them at the halfway stage. Spinners came into play. Danish Aziz and Arif Yaqub bowled splendidly, and Pindi were never at the races. Welcome along to the post-match studio here and to discuss this game and what's coming ahead with the semi-final lineup all being ready. I've got alongside me former Pakistan international Marina Iqbal. Marina, very good evening. Thank you, Faisal. This game proved one-sided, a bit of a damp squib, but the qualification was already sorted. Yeah, it did, but I think I expected a lot more better performance from Rawalpindi, because when you have already qualified for top 4, you need to be clinical about especially the planning. They knew they were going against Karachi. I think early on the ballers did not deliver the line and lengths, even though there was something for the bowlers off the surface, and we've seen that when Karachi came to bowl. But I think that they struggled there. The total was out of their reach, and then the way they batted, that was a huge question mark for me. They did ring changes though. They make 4 changes. That was a clear signal that they were really looking ahead rather than to this game. But this demoralizing defeat will surely hurt them. Well, definitely, and I think I'm not talking about the changes, but the regulation guys. I think Nasir Nawaz, he had to click. Umar Amin, he should have taken responsibility. Nawaz also. But also I think they had a lot of responsibility in terms of how they could have planned the game better. There were senior resources available, but I think they looked very clueless against Karachi. And talking about Karachi, what they did right with the bat and with the ball, how did you see their performance? Well, I think a lot of things are coming together as they moved into semi-finals, and again, it was a good reflection that Danish Aziz came up and he scored runs that was much needed, and he took wickets as well. I think that actually added more depth to Karachi batting. It was there, but he wasn't clicking. So I think Asad Shafiq will be a more content captain, because now with Danish scoring, Azam already was there. And obviously, Khurram Manzoor did contribute, but there was a bit struggle early on. But I think Ahmad Alam, Khurram up at the top, but much needed performance in the middle order was required. All right, Karachi did what they needed to do, but you have to say that Rawalpindi was very disappointing with their batting effort. I mean, there's some really soft dismissals. Well, definitely. I think when your top 4 are not picking up the length, there is a big concern for you. They knew they were against some really good bowling with Sohail and Ghulam Mudassar with the new ball, then Danish coming in, Arif Yaqub. So they had their work cut out. But again, I think the way they came in, there was no planning. They were clueless. They were not picking the line lengths up. And this was Umar Amin, very easy and soft dismissal. But again, I think the problem started when they conceived this target, and then early on they lost wickets. But again, I think being professional batters, you need to understand what the surface is. You need to adapt to them, and you need to pick up your bowlers. I do understand that there was no loophole as far as the bowling of Karachi was concerned, but I think that they dug up a hole for themselves. Yeah, and when you see this wicket package, we have to talk about that guy, because you saw some classical leg spinning dismissals in that package. And the man that I'm talking about is Arif Yaqub. What a beauty he produced to get rid of Umar Masood. But overall, he's been a revelation throughout the tournament. I think he's the dream leg spinner for any captain. Again, you have to follow his journey. He was very clinical in longer format. That actually allowed him to strengthen his foundation. And when you got that foundation right as a leg spinner, it's pretty much easy job when you move into shorter formats. And I think that actually did help him, because the line and length he bowled at, obviously he did get something off the surface, but the line and length, they were the wicket-taking deliveries. And that's the interesting story as well about Arif Yaqub, because he wasn't in the limelight, he wasn't in the main circuit, and all of a sudden in this huge tournament, he's came to limelight, and the way he performed, I mean, you have to admire his character, not just his skill, but his temperament. All these televised games, I'm not sure how many he's played in his life, but he didn't give a hint that he was new. Yeah, definitely. That actually tells and that reflects how he walks and he actually bowls, because he's not concerned about whatever is happening on the other end. He does not take in consideration which batter is there at the other end. What he does is very basic, simple things. He comes in, he knows his length, he knows what the surface is doing, and he brings the best skills out of it. And we all know that the lineup for semi-finals are now ready. This is some mouth-watering contest
we'll have a similar contest, Rawalpindi against Karachi. But first up, it will be the battle of KPK, Peshawar versus Abbottabad. These are mouth-watering matchups. How do you look ahead to these games, Marina? Well, I think both Fatah and Rawalpindi are again having a chance to redeem themselves. Fatah and Peshawar, obviously Fatah came very close to victory. Abbottabad. Peshawar bowlers actually went under a lot of pressure today against Fatah. But I think Abbottabad is more sorted now, and I think the batting lineup has been started to stand up. But Peshawar, I think they are all sorted. They need not to think a lot about changing things, but Abbottabad do have a chance to put some pressure, and we all know that the law of averages, they still stand for Peshawar. And again, I think Rawalpindi and Karachi, again, the way Rawalpindi played, I think they need to sort a lot of things out. And talking about that first matchup, I know Peshawar is the unbeaten side. Who knows, it might be a Fakhar Zaman afternoon and he can have a blitz, and Peshawar, despite being unbeaten, could be in for a surprise. Well, definitely. If one man can change the fate of Peshawar and in favor of Abbottabad, I think it's definitely Fakhar Zaman. He still needs to click. He did click in one game, but again, he did not play a lot of matches, but you can always bank on him. Yeah, and I'll ask you the tough one. How can Rawalpindi turn around their fortunes so quickly? Because they took a mauling today. They took a mauling yesterday against Peshawar as well. How difficult it would be for them to bounce back? I think for most of the teams, the power play is very crucial, especially if you are up against some good, strong bowling that Karachi has. You need to have your own plans, because you cannot just come out there and have a go at whatever is being bowled at you, because Sohail and Ghulam Mudassir and even Dhani, if he comes in, they're not going to give you easy runs. So you need to have a plan, certain plan against these bowlers. You need to target someone at least in the middle overs. Strike rotation, again, I think it's a very underrated thing. If you can manage to keep your wickets in power play and not go all out blindly attacking Karachi, that might set them off, because they've got wicket-taking bowlers, and that can actually give momentum to Rawalpindi. Well, thank you very much, Marina, for staying up so late. And it's just about a wrap from here at National Bank Stadium. The Super 8s are done. The semi-finals are ready. We thank you very much for watching our broadcast today. We look forward to your company tomorrow for exciting games. And it's time to say good night from National Bank Stadium. Yes, an over. Oh, yes. That's dead in front. That's out any day. जोरदार अपील, बिल्कुल स्टंप्स के सामने मौजूद थे और दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर लिए। खेलने के लिए गए हैं दानिश अजीज के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, गेंद के नीचे आते हुए और अच्छा कैच मुकम्मल कर लिया। आउट, दानिश अजीज का जादुई ओवर। Smashed over mid wicket. So Nawaz is starting to middle some. He hasn't got hold of it. Straight away, there you go. 19 to Arif Yaqub. लाइक के साथ गेंद दी, ऊंचा खेलने के लिए चले गए, आउट होने का मौका और आसान कैच मुकम्मल कर लिया।